9C. So I, CA Himanshu Singh, take this opportunity to present the deliberation on the GSTR 9 and 9C, how to file the GSTR 9 and 9C, and how we can make the our compliance with the proper clarity and with the proper understanding. So with this, I would like to start the session for the annual returns GSTR 9 and 9C. Before starting the session, I just want to let you know that there are certain changes that has been introduced by the government this year, and by introducing those changes, some complexity has arisen due to this changes introduced by the government, and people are trying to do the compliance as compared to the last financial years that we have already filed the 9 and 9C. This year has some little bit typical and little bit complexity in the GSTR 9 and 9C, and we have already seen lot of GST notices in the of the taxpayers in the previous financial years, where the department has raised the queries, confirmed the various demands on the basis of the figures reported in the GSTR 9 and 9C as compared to the tax liability reported in GSTR 3B returns. So now the compliance in the GSTR 9 and 9C has become more crucial for the professionals as well as for the business fraternity, those who are regularly making the compliances in the GST. So with this, we need to keep in our mind that GSTR 9 filing is not merely a compliance, but it is also a litigation management process. So we need to understand that litigation management can be done by the proper filing of the annual returns. I'm not taking much time in this, and I would like to share my screen. I am using the Spectra GST software for the demonstration of the GSTR 9 and 9C filing. First, in the first part, I will walk over with the options available in the software for the filing of GSTR 9 and 9C, and simultaneously I will be discussing about the options available and the fields in which figures are required to be reported. And after that, we will be discussing about the complex scenarios. There are multiple situations that the users are facing. Lot of queries has been raised by the professionals, so considering those, we will be discussing in the second part. First, we will be discussing about the table wise analysis and table wise reporting formalities requirements of the GSTR 9 and 9C. So let me share my screen once, then I will start. I have shared my screen. I hope it is visible to all of you. So is it visible to all of you? Please just confirm, Yes, sir. anyone. Yes, sir. Visible, visible, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank It you. is visible now. Okay, fine. Thank Yes, you. sir. Yes, sir. So I am just accessing my Yes, Spectre visible. GST. I will be choosing one company for the purpose of demonstration. So I have just selected one company and just opened the GSTR 9 options available in the Spectre. I hope everyone is able to see my screen that is in GSTR 9. Yes, sir. It is visible Okay. now. Thank you very much. Thank you. So, sir, first of all, we will just walk through what are the functionalities and options available in the software and how we can utilize for our compliance filing of the GSTR 9 and 9C. And just a second, I can show you. Okay, so you can see this software is open and there are multiple options available. In the first tab, it is showing software data. In the second tab, it is showing GST portal computed data. In the third tab, it is showing GST portal latest saved data. And last is compare data. Okay, so first of all, if you want to file the return through the software, then you need to move to the software data first of all, and by default, this option automatically appears.
In the software data, you will find there are multiple tabs available in the left side: part A, part 1, part 2, part 3, 5, 4, 5, and 6. So you can see, as per the structure of the GSTR-9, GSTR-9 has been divided into the 6 parts and total 18 tables. Now, if we can include the late fees table, then it can be total 19 tables. Otherwise, functional tables are 18, and table is automatically filled. So it has been divided into 6 parts. GSTR-9 is divided into 6 parts and 18 tables, practical 18 tables, where taxpayers are required to report their figures. So we will move to the part 1. Part 1 is basically structured information. There is nothing is required at our end. It is auto-filled. We need to start with the part 2. Part 2 is basically the information about the outward supply and inward supply made during the financial year in which tax is required to be paid. So part 2 is covering two information. One is the outward supply information, and second is RCM information, or RCM liability information, basically we can say. So part 2 divided into two tables: table number 4 and table number 5. Table number 4 contains the information about the outward supply and information about reverse charge, and part 5 contains the information about the outward supply that is not liable to tax by the supplier. There are certain transactions like zero rated supply without payment, exempt supply, non GST supply, or any supply in which recipient is required to pay tax under reverse charge mechanism is covered under the part 5. So part 5 is practically covering those outward supply transactions in which tax is not required to be paid by the supplier himself. Whereas in the part 4, it covers the information outward supply in which tax is required to be paid by the supplier, or two transactions that are RCM in which tax is required to be paid by person, taxable person, under reverse charge mechanism. So this is the part 2. Now, in this software, you can find there are multiple steps 1, 2, 3, 4. So there it has been designed for the convenience of the professionals. So first of all, we will just deleting my existing data, okay, so that it can be easy to make you explain how it works. So first of all, we will do step 1. Now what is the step 1? Step 1 is basically, it will fetch the data from the GST portal GSTR-9 section, which are auto populated and not editable. So there are basically few information available in the GSTR-9 return that is auto-populated and not editable fields. So there are basically two type of fields that are not editable. That one is given in table number 6A. That is the input tax credit information that is auto-populating from the GSTR-3B returns, and table number 9 of the GSTR-9 return, where the tax paid is coming from the GSTR-3B return, that is tax paid through cash or tax paid through ITC. So these two basic information that will be auto populated and not editable, and that is to be fetched from the step 1. So step 1 is mandatory to get the complete information, and if you want to prepare the return through the software, step 1 is mandatory to proceed. So first of all, we will fetch the information with the step 1, and step 1 will fetch the information about the not editable fields from the GSTR-9. Once it is fetched, we can proceed through the step 2. Now in the step 2, you will find there are option to prepare the GSTR-9. There are three options available. One is the prepare with the GST portal computed data. Second is prepare with the GST portal latest saved data. And third is prepare with data entry in the software. So if you want to prepare the GSTR-9 return with your own information without getting to the information about the GSTR-9 auto-populated by the government, or without other old saved data, just simply click GSTR-9 data entry in the software, and now you can start manual data entry in the software. Simple. But step 1 and step 2 are little bit crucial. Reason being, in the step 2, there are three parts. So part 1, prepare with the GST portal computed data. When you click on this, you will find it will fetch the information from the GSTR-9 system computed PDF summary. System computed PDF summary is made available by the GST portal,
and that system computed summary is prepared by the portal on the basis of the GSTR-1 and GSTR-3B filed by the taxpayer. So this summary is basically prepared by the GSTN. Software allows you to fetch the data from this system computed summary into the software. So you just click on it and it will fetch the data from the system computed summary. So you can say it is auto drafted GST9 GSTR9 return from the government provided data. So you can fetch this information. But the question is, what kind of information that can fetch by the table number, that is system computed summary or this system computed data. So it can fetch the information about the outward supply and RCM transactions, but it will not fetch the breakup of the GSTR-3B ITC information, because in the GSTR-3B ITC information breakups are not provided that are required in the GSTR-9. So you can see that information from the system computed data has been filled in the software in the table 4 and table 5, as the case may be, whatever the transactions are available. But in the part 3, the information about the table 6A, that is ITC information, that is coming from the auto computed data, and that is not editable. So you need to provide the breakup from your own information. That breakup is not available on the portal, so you need to fill your own information. Okay, in this step 2, you will find there is another option available. Prepare with the latest saved GST portal data. What does it mean, and what is the difference between first option and second option? As I have already told, this is the first option is based on the GST portal system computed PDF summary. GST portal is providing a PDF, some PDF data in which data is auto filled from your 1 and 3B. Okay, so that can be fetched in the software also. But in the second option, prepare with the latest saved GST portal data, this option can be used where you have made any changes in the portal. In the first time when you log into the portal, you will find system computed summary is auto filled in the GSTR-9 return. If it is so, you need not to do anything. But if you have changed the data on the portal subsequently by manually logging to the portal, or by making changes through the software, through JSON file, through any other tool, but ultimately the data has been saved on the GST portal after the fresh data provided by the government. So once you have made changes on the portal, and if you want to fetch that data in the software, then you need to choose the second option, prepare with the latest saved data on the portal. So the whatever the last saved data on the portal will be fetched in the software, and you can use for your understanding and your purpose. So this can be done by the software. So this is basically step 1 and step 2 that can help you in auto fetching the data from the portal. Now coming to the basic part. So you can see that it has already filled B2B, B2C transactions, and in this software, we have also provided a help section. You can see we have already provided the help section regarding the separate tables. Table number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For each table, we have provided the help and interpretation. You can see in the basic help part, you can find interpretation of the table as provided by the GSTN. GSTN has provided the help instructions in their offline tool. So we have provided those help instructions readily available for you in this help part. And I have also provided my own comments on this table, and I also given the table structure, whether the table is optional or the table is mandatory, which tables are auto-filled, that has been provided here in this help section that can be useful for your team members, staff, those who are doing the compliances and having any confusion about any reporting requirement in any table. So if you feel is there any confusion or any reporting requirement, understanding required, just click on the help section and you will find the answers as per the government tables requirement. Okay, so this is the basic part that I have told you. In table number 4 and 5, I think a lot of people are filing the returns since 2017. So there are not much changes in this. But one thing keep to in mind that in table number 4G, that is given here, inward supply on which tax to be paid on reverse charge basis to be reported here. So if, for example, if we have any transaction where inward supply is there
and you need to report the inward supply liability, RCM liability, then you can report here. So this is one thing that is normally different from the other sections. So entire table 4 is for reporting your outward supply, but the table number 4G and 4G1 is for reporting the RCM transaction, means the purchase made by you, in which you are required to report the tax under reverse charge mechanism. Apart from that, other all the tables part are reporting of the GSTR 9 are for outward supply reporting. Coming to the next part 3, the part 3 is very crucial part for this entire GSTR 9 for the financial year 24-25. This part 3 contains the three tables: table number 6, table number 7, and table number 8. So coming to the first point, the table number 6, that is table meant for reporting the input tax credit availed during the financial year. In table number 6A, you will find the auto-populated ITC is fetched by the government in table number 6A that you have already fetched in the software through step 1, and you will find that table number 6A will contain the entire input tax credit that you have claimed in the GSTR 3B returns filed from April to March, April 24 to March 25. Now, when the information is already available in the GSTR 3B, then what is the purpose? So government has provided that you need to provide the breakup of the input tax credit. Whatever the input tax credit you have claimed through the GSTR 3B returns during the financial year, you just need to provide the breakup. What the breakups are required? You need to provide the breakup of this total input tax credit. So first of all, the most important table is table number 6A1. That table number 6A1 is for the purpose of reporting of the such input tax credit that was claimed in 24-25 but was related to the previous financial year, that is 23-24. As per the provisions requirement, we can claim input tax credit of one financial year into the next financial year also up to the October month return. That can be filed by 30th November. सो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले साल क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपसे पूछा, फर्स्ट टाइम ये पूछा गया कि कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी आपने, जैसे इस एग्जांपल में जो आपके सामने मैंने कंपनी खोली है, total input tax credit claimed is 4,73,000. That 4,73,000 input tax credit has been claimed during the financial year 24-25 3B returns. Now I need to report how much input tax credit that has been claimed in 24-25 is related to 23-24. That was claimed from April 24 to October 24. That was filed by 30th November. So in that case, I need to report. Say for example, I'm just reporting here. I have claimed 1 lakh rupees CGST and 1 lakh rupees SGST as input tax credit that was relating to the last financial year. So now you can see the net ITC for the current financial year will automatically calculated as 1,19,000 CGST, 119 SGST, and total GST is 2,73,000 that is relating to the current financial year claim. And now we need to provide the breakup in table number 6B, 6C and 6D. So you can fill here breakup of that 1,19,000, not the 2,19,000 entire breakup required. We need to give the breakup of 1,19,000. That is the ITC relating to the current financial year. There may be possibility कि आपने पूरे साल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे इस एग्जांपल में दिया है 2,19,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, उसमें से कुछ इनपुट होगा, कुछ कैपिटल गुड्स होगा, कुछ इनपुट सर्विस होगा, तो आपको पूरे 2,19,000 का ब्रेकअप तब देना है अगर ये पूरे 2,19,000 पूरा करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1,00,000 रुपए जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड था, तो you need to provide the breakup of 1,19,000. So I need to just enter here 50,000 rupees my input and 69,622.88 is my capital goods ITC. So ultimately, and in that case, IGST is input service 33,930. So now you can see I have just provided the breakup
of my table number 6B like this. So in table number 6B, I have provided the breakup in three parts: input, capital goods, and input services. And please note, we need to provide the breakup of only the amount appearing in table number 6A2, not for the entire ITC, so that effectively the difference between I minus A2 will come to the zero, and that should be practically zero, because government is asking you need to provide the breakup of which breakup. You need to provide the breakup of the ITC that you have claimed in the current financial year, that is relating to this financial year only, not for the earlier ITC. So this breakup is required only for this portion. I hope you got the point. So this is the table number 6B. In the same way, table number 6D and 6C are there. 6C and 6D is relating to the input tax credit reporting requirement. Say for example, if I have entered 40,000 this. So I have ITC availed from the unregistered parties under reverse charge mechanism for input service. So I have just entered 10,000 rupees as input CGST and input SGST for input services. And you will find the difference between I minus A2 is effectively zero. So practically it is clear that breakup is required for the only this part. Now we have provided certain features in this software. You can see view ITC from the GSTR-3B annual summary. You can just click here and software will fetch the information from the GSTR-3B annual summary available in the portal PDF. You can see in the GSTR portal, GST portal, you will find under GSTR-9 there are multiple options available. One is GSTR-3B annual summary. So whatever ITC you have reported in the financial year, during the financial year, that is coming as consolidated into the PDF file. So you can see here how much figure you have reported and in which table in the GSTR-3B return. So you can just see here, it is provided here. So what you have reported in your GSTR-3B return, it can be seen here in just a single click. You need not to move to the 3B or Excel files or software in another location. It is simply available in the software. Now you can see we have provided in the software last year ITC from the GSTR-9. Import table 6A1 information. See, for example, this table 6A1 information is by default not filled. So we need to fill. How we can fill? It is asking कि लास्ट ईयर की आईटीसी आपने कितनी क्लेम करी है, कि जो 2,19,000 रुपए आ रहा है इसमें कितना इनपुट क्रेडिट आपका पिछले साल का है. अब अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी रिटर्न फाइल किया हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल का 9 फाइल किया हुआ है, और लास्ट फाइनेंशियल के 9 में हम लोग अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट ईयर की कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नेक्स्ट ईयर में ले जा रहे हैं, ये हम लोग जीएसटीआर 9 में दो जगह रिपोर्ट करते हैं. टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट करते हैं और टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करते हैं. तो सॉफ्टवेयर में हमने एक ऑप्शन ये दिया कि फ्रॉम टेबल 8C ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर GSTR-9. सो जस्ट यू कैन क्लिक हियर. अगर आपने लास्ट ईयर में GSTR-9 में डेटा फिल किया था तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फेच करके दिखा देगा. ठीक है, तो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR-9 वाज नॉट अवेलेबल फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर. मैं जिस कंपनी के एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें नहीं फाइल था. इन द सेम वे अगर आपने 13 के 8C के बजाय आपने 13 में फिल किया है, just click on the table 13 and it will fetch the last year ITC from the table 13. Now there is a confusion among the professionals. Sir, last year 9 I have not filed. There may be requirement that turnover was below 2 crore rupees, so 9 was not filed. That was optional, not mandatory. So taxpayer has not filed 9. Should I report the ITC of the last year claimed in the 24-25 in this field? Answer is yes. In my humble opinion, you should report. If you could not report in last financial year due to the non requirement of filing of 9, तो लास्ट ईयर की तो फिगर आप रिपोर्ट कर नहीं पाए लास्ट ईयर के 9 में. तो यहाँ पर जब करंट ईयर में ऑप्शन दिया है, then you should report the correct information for the correct and relevant presentation only. So you can report here in table number 6A1 if you have not filed last financial year return due to any reason. Okay, the second question that comes from the professionals or users, sir, last year 9 I have filed, but unfortunately or unintentionally, the figures in 8C could not be filled. Figures in table number 13 could not be filled.
Should I report this in table 6A1? Yes or no? Sir, in my humble opinion, in my professional understanding of the provisions and returns, I can simply say, sir, last year you have committed a mistake. Last year you have committed a mistake unintentionally, whatever may be. But this year government has provided you the functionality. Government is asking specific field you have been provided. Nothing has been mentioned that the table 6A1 should match or must match with the last financial year table 8C or table 13. It is not mentioned in any instruction as of now, and there is no any validation in the returns. So in my humble opinion, when government is not restricting, then why should we restrict ourselves from the reporting of the correct information if the last year information was wrongly filled or could not be filled? So we must report in this table number 6A1 if the information could not be filled in last financial year table 13 or table 8C. That is meant for the correct reporting, and this reporting requirement has been introduced in this year. Practically it should match with the last year carry forward as uh, reporting in this table 6A1. बट अगर लास्ट ईयर में कोई मिस्टेक हो गया है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं वो मिस्टेक आप कंटिन्यू करते रहिए. आपके पास गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, देन यू कैन रिपोर्ट हियर. देयर इज नो एनी इशू इन माय हम्बल ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग. Coming to the next part, sir. So I hope this will clear your doubt. And next third part is import table, import from table 3B annual summary. तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फिगर्स और दिए हैं कि आप टेबल 6F का डेटा जो आपने 3B में फिल किया है, क्या? you can auto populate here, you can fill here. So you can see table 6F is for the reporting of import of service ITC. You can see import of service ITC in table number 6F. So in table number 6F, you can just click, and if you have filled the data in GSTR-3B, that can be fetched from your GSTR-3B annual 3B summary for the current financial year. In the same way, you have been provided import ITC, ISD ITC in table number 6G. So you can see in table number 6G, input tax credit received from ISD. So we can just fetch the data from annual 3B summary, and you can see here, since the information in table number 4A2 is not filled, so it is coming 0. Also table number 4 ISD is not filled, that is why it is coming 0. We have not provided auto fetching of this ITC data in the GSTR-9. This data is coming CGST in all other ITC data that comes to the table number 6B. We have not provided auto fetched facility because in GSTR-3B we have entered the figure in single entry, not provided the breakup of input capital goods or input service. So in absence of this, we are unable to determine which the figure is to be posted into which field, input in capital goods or input service. So you need to fill the breakup you manually. If you feel that the ITC that you have filled in table number 4A5, that is coming here, is entirely of input credit, input or capital goods or input service, whatever may be. If you feel that it is for single entry, not for the breakup, so just copy here and close it and just come to the portion and just paste it and it will fetch. So you can just simply enter this figure information by just copy paste from the support. Okay, so this is the basic understanding that I have provided for the GSTR-9 table number 6. Coming to the next part of table number part 3, that is the table number 7. In the table number 7, we need to report the various information regarding the reversal of input tax credit. In Can we this, have the you can query see, on this question now? sir, hello. Or we will take later. Sir, can we have the query on this question now, which is with regard to the introduction of A1, or we should take it later on? Sir, we will take the queries at the last. Okay. Okay, sir. Okay. Once I will conclude the GSTR-9, I will take the queries. Okay, sir. Thank you. Okay, so coming to the next part 7, table number 7. Table number 7 is basically for the reporting of the reversal made during the financial year. Now you will find there are multiple requirement in the GSTR-3B for the reporting of reversal. Now you can see, just I'm opening the 3B structure.
In GSTR-3B ITC reversal, there are only two columns. As per Rule 42, 43 or IGST rules and others, there are two type of reversal, mandatory reversal, Rule 42, 43, 17.5. So it is called as permanent reversal and temporary reversal in GSTR return, GSTR-3B return. But in the GSTR-9, government is asking for the various breakup of the various rules. So we have just provided the table 7 help. Just click here and you will find what is the requirement of the various reversal. So you can find rule number 37, that is requirement for the reversal of ITC if not paid by the party within 180 days. So that is reversal requirement and it is of temporary nature. Rule 37A, that is the reversal of ITC by non-filing of the supplier GSTR-3B returns. Rule number 38, that is reversal for the banking companies and NBFCs. Rule 39, ISD distribution credit notes. Rule 43, that is for the proportionate reversal of exempted and exempted or taxable supply. 42, 43 and 17.5 is blocked credit, and next other reversal are there. So you can see there are multiple reversal requirements in GSTR 9. Just a second, sir. I just closed it. Okay, so in table number 7, we need to report the various reversal. So the help section has been provided just to give you understanding about what information is required to be reported in various parts. So you can just report here in table number 37, 37A as per the need and as per the requirement. And in the last table number 7H, that is other reversal, just click here and you need to enter the other reversal reporting requirement. If you have other reversal, you can just put the information or description and amount of other reversal here. So this other reversal portion can be entered here in table number 7. We will take the questions regarding the complexities of reporting of various scenarios one by one subsequently. First, we will understand the structure. I hope you will clear and motivate your team members, those who are in compliance work. Just refer the help section, that will clear their doubts for the reporting requirement as per the government instructions also. Now coming to the next table number 8. Table number 8 has been now changed by the government in this financial year. You can understand that starting from the table number 8A, that initially it was fetching the data from the table number 2A, sorry, GSTR 2A return. After that, government has modified that 2A will auto-populate the data of the particular financial year invoices. In last financial year, government has changed the reporting requirement of the table 8A, and it has decided that in table 8A, the ITC from the GSTR 2B will be auto-populated. And again, in the current financial year, government has made a minor change, but having the great impact. What it has been changed in the current financial year? As compared to the last financial year, this year has also been changed in table 8A. In last financial year, it was from the table number GSTR 2B. Table 8A was auto-populated from the 2B. This year is also auto-populated from the 2B. But the difference is in current financial year, in current financial year, there is a requirement has been notified by the government. We will fetch the data in table 8A from the 2B, but the invoices that are relating to the financial year 24-25 will only be auto-populated in table 8A. So I hope you got the point. It doesn't means that 8A is entirely 2B. It is not completely correct. 8A is completely 2B is not correct. There can be differences. How? इस साल गवर्नमेंट ने क्या कहा, जीएसटीआर 2B से ही हम एटे लेंगे. लास्ट ईयर भी था, लेकिन लास्ट ईयर 2B से कंप्लीट 2B से एटे लेते थे. इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्या किया कि 2B में जितने भी इनवॉइसेस करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, एनी इनवॉइस डेट starting from 1st April 24 or ending on 31st March 25 reported in
24-25 to be, or reported in 25-26 to be up to the October to be GSTR to be returns can be filled in table 8A. I hope you got the point what I want to say. इस साल के टेबल 8A में क्या किया इन्होंने, टेबल 8A के अंदर इन्होंने, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल और दिखाता हूं 8A। Now, I hope you got the screen visible to you. In the table 8A, government has provided that whatever the ITC, how table 8A is calculated, ITC is for 2B. So what you need to do, whatever the ITC that is showing in your 2B will be here, that you need to plus, and you need to add the invoices of financial year 24-25, that is the date of invoice 24-25, but appearing in 2B of April 25 to October 25, meaning thereby अगर आपकी कोई भी इनवॉइस अगर 31 मार्च 2025 से पहले की है, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच की कोई भी इनवॉइस है, अगर वो अप्रैल 25 से अक्टूबर 25 के बीच के 2B के अंदर यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल के 2B के अंदर आ रही है, तो भी वो 8A के अंदर ही आपको दिखेगी, वो 8A पे आ जाएगी। और उसमें से माइनस क्या करना होगा आपको, जो भी इनवॉइसेस 23-24 की है, जो कि आपके अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 के 2B के अंदर आ रही हैं, that need to be excluded because these invoices are relating to 23-24, so these to be excluded. So अगर आप ये इस तरीके से 2B की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो ITC है आपकी 2B की वो आपको मैच हो जाएगी। So just I have given you another example. Say example in invoice date. Invoice date is 15th. Invoice date is 15th January 25. You can see invoice date is 15th January 25. So that is appearing in 2B. That is fine. Feb 25 के 2B में आ रही है, तो ये सेम ईयर 8A में कंसिडर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर 20 मार्च 25 की इनवॉइस है, लेकिन ये मई 25 के 2B में चली गई है, 20 मार्च 25 की इनवॉइस मई 25 के 2B में चली गई है, तो ये हमको क्या करना होगा, 8A की कैलकुलेशन में ऐड किया गया है। और अगर कोई क्रेडिट नोट है 10 मार्च 24 कहने की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि मई 24 में आ रहा है, दैट यू नीड टू exclude or we need to minus it. So by this exercise we can just simply understand the table 8A working, how values are in table 8A are coming. However, even after this there are lot of glitches in the table 8A that has been reported by the various users. In few cases we have seen in table 8A date few invoices are repeating twice. For this few cases invoices are not appearing in table 8A at all, that are as per the government requirement, but still those invoices are not appearing in table 8A. So there are certain glitches in the table 8A still, but as per the norms what we need to do, we can just fetch error. Okay, so now I just want to tell you that what is to be done. Just need to enter here, we need, so table 8A will be auto populated and table number 6B will come from the table number 6B. 6B, in the table 6B we have provided the breakup. We have provided the breakup. Breakup of what? Breakup of the input tax credit. Breakup of the input tax credit claimed during the financial year. So whatever the breakup you will provide here, that will be auto populated in table number 6B. So you need to be careful that 6B will be the final value that you are providing as a breakup. Now there may be scenario, say for example, if you have claimed the less ITC. For example, in this example, I am just entering 1 lakh rupees ITC, CGST, SGST I have claimed in the current financial year, and remaining 1,19,000 ITC I have claimed in the next financial year. So what I need to do, that 1 lakh breakup that I have entered in table 6B is auto populated here. I need to enter the difference of the ITC that I have not claimed this financial year, but claimed in the next financial year up to the April to April to October 25. So that need to be entered here कि current year की कितनी ITC हमने next financial year में claim करी है, ये हमको यहाँ पर report करना रहेगा. So as soon as we report it here, the value will,
auto fetch, and it will be वो तो reporting ठीक है, complete. तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन इसके बाद सर क्वेश्चन भी करेंगे। Okay, I request everyone to please mute, and we will continue further. Now coming to the next part, table 8A, table 8B that has been completed. Now you will remember that many of the taxpayers received the in notices from the GST department that you have difference in table number 8D. So 8D was calculated from the 8A minus ITC claim minus ITC carry forward in the next year. So if there is any difference, say for example, if I entered in place of 1 lakh, I have just entered 2 lakh. So here it will show 1 lakh rupees difference. So what does it means? It means that it is showing as per the ITC available in 2B was 2 lakh 19,000. ITC available in the 2B was ITC available in the 2B was Sir, 2 lakh 19. requesting to the organizer to mute all so that there will be no disturbance. Everyone please be muted, and actually we have muted all, but some people come and unmute themselves. So please requested, please mute everyone so that everyone can understand. Fine. So next part is what I want to explain you. ITC as per 2B is 2,19,000. We have claimed in the current year 1 lakh rupees, claimed in next financial 2,19,000. So it means table 8D is showing a difference of 1 lakh, and 1 lakh rupees is showing as excess ITC as compared to the 2B. So department will definitely going to create a demand for this ITC, excess ITC. So please make sure if you have any ITC in excess, if it is actually excess, then you need to report the through DRC 03. You need to pay the tax through DRC 03. If it is not excess, but your interpretation or your understanding is wrong, or maybe possible it is not populating the correct figure, you need to raise a ticket with the GST portal, because value that is auto populated in table 8A, we have no control either as a professional or as a taxpayer or as a software company. We have no control over the data auto populated from the table 8A because it is not editable. If you find any discrepancy as per your working, whatever the working you have learned, you have understood that table 8A should contain these invoices of the 24-25, but it is available in 2B but not showing in table 8A or not calculating in table 8A, then you need to raise a ticket. You need to create evidence for that. You have intimated to the GSTN, or you have raised a ticket or complaint to the GSTN. Keep the copy so that it can help you while adjudication process by the department, because department is definitely going to issue a notice or this one difference. If you encountered any difference, department is definitely going to raise the notice. So please make sure, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि आपको लगता है कि टेबल 8 गलत आ रहा है, आपकी वर्किंग और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से गलत आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि टेबल 80 में कहां से फिगर आएगी, बट स्टिल यू फील दैट इट इज रॉन्ग, then you need to just prepare your own working, raise a ticket, file a complaint before the GSTN, keep the copy of your that complaint you have raised. I am very sure your complaint is not going to solved by the GSTN, because they have no any mechanism. Whatever the support team they are sitting have no any mechanism for the calculation. They will simply give you the instructions or guidelines by the government कि आपको 8A की कैलकुलेशन ऐसे होती है, लेकिन वो आपको शायद ही कोई हेल्प कर पाए, बिकॉज आई हैव केम अक्रॉस थ्रू वेरियस हाँ तो उसको सही कर दियो, मेरे को पेन के टाइप ही ना। I have came across through various users, but still could not find any situation solution from the GSTN helpline. So please make sure अगर ऐसा कोई केस है तो आप प्रॉपर रिपोर्ट करिए इसको, और इसका कोई एविडेंस जो भी है वो रख लीजिए, ठीक है। Okay, coming to the next portion, that new reporting requirement has been introduced this year. You can see here we need to report the ITC of import. IGST paid on import of goods, including the supplies from SEZ. If you import any goods from the foreign country or import from the SEZ, that whatever the IGST we have paid, so we have to report in table number 6G in this portion. Whatever we have paid,
And how do we determine that it has been paid? That will be determined only through the custom bill of entry. As per the rule number 36, sub rule 1, clause D, you will find the provision that input tax credit of the import of goods can be claimed on only on the strength of bill of entry. तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपने अगर इंपोर्ट की कोई आईटीसी क्लेम करी है तो कस्टमर से, क्लाइंट से आपने इंपोर्ट की बिल ऑफ एंट्रीज की कॉपी देख करके यहां पर वो फिगर आपको फिल करनी होगी, whatever import ITC that has been claimed. So whatever import ITC that has been claimed in the current year, may be possible in March you have paid the import, you have imported certain consignment, paid the IGST through bill of entry, but material has been received after the March, that is received in April. So in that case, in table number 6, where the import is reported in table number 6F, तो यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट करना है, that you need to report only the ITC that has been claimed during the year. But if you have paid, say for example, I'm just entering a figure 2 lakh rupees. I have just paid import, claimed import ITC 2 lakh rupees. Okay. And here what I need to report, whatever the IGST ITC 2 lakh rupees. Okay. So whatever the ITC that is here need to be reported in this part only. Sorry, I have reported in wrong table. Okay. Fine. So this will be auto-populated here in table number 8H. In table 8H, it has been auto-populated. There may be scenario where you have paid IGST on import by bill of entry 3 lakh rupees. But in current financial year, you have claimed 2 lakh only. Thus, you need to enter only 3 lakh. 2 lakh is auto-populated, and this table number 8H1 has been introduced in this year. That is IGST credit availed on import of goods in next financial year. So what we need to do, just need to enter 1 lakh rupees in this table number H1. So that will reconcile. So what now, how the department will look into this? How the department will look into this? Department will look into this, that you have claimed 2 lakh rupees. That is fine. You have paid 3 lakh rupees through bill of entry, claimed through 3B, and whatever not claimed is claimed to be next financial year. So this reporting requirement in table 8H1 is newly introduced in this financial year. So I hope this is the basic understanding of the table 6, 7, and 8. Coming to the next part, part 4 and table number 9. That is very crucial and very important part, and that is for the purpose of all the understanding for the professionals. And just want to explain you this table number 9 portion. There are two part. One is the tax payable and other is the tax paid through cash through ITC. So you can see there are two sections, tax payable and tax paid. You will find tax payable section is editable field, whereas the tax paid section is not editable field. You can see take tax payable is editable, whereas tax paid is not editable. So tax paid is auto-populated from the 3B GSTR 3B tax paid section, whereas tax payable is also by default auto-populated. But if you have made any changes, then you need to just enter your own figures. By default, the value should come in table number 9 tax payable column from table number 4N. 4N contains the figures of outward supply and reverse charge transactions. So what you need to do, you need to just, we have provided the option get table tax payable data from table number 4N. Just click here and it will fetch the information from the table number 4N. So you can just simply fetch here. Now the important point that we need to take care and we need to remember that the tax payable section showing in table number 9 is auto-populated in GSTR-9C 9Q. Whatever you will find in GSTR-9C, you will find there is a tax paid through GSTR-9 comes from the 9. So you will find this data is very much important. If you have not entered the correct figure here, you have not verified this figure will be auto-populated in table number 9Q. And once you have filed a GSTR 9, that table data
will be auto populated in 9Q, and that will not be possible to modify, and that may create a difference with 9 and 9C, and department may again raise the demand or queries on such differences. So please be sure that whatever the amount of tax payable showing here must be correct, must be as per the calculations of the table number 9 of the GSTR 9C, so that both the tables can be linked and ultimately there should not be any difference at all. Okay, so this table is, so just try to read the instructions given here. This instruction is for your understanding, and the value here tax payable column should come from the table 4N is also given in the instruction of the GSTR 9. So you can refer that table number 9. Here it is clearly mentioned in the government instructions that the value of the GSTR 9 come from the table number, that value come from the table number 9 of the GSTR 9. So please make sure that you must report a proper reporting of this figure. Coming to the next part, table number next part number 5. We have just understood table part 1, 2, 3, 4, and coming to the next table number 10, part 5 contains the information where the taxpayers are required to report the current financial year information reported in the next financial year. Say, for your clarity, I'm just entering some figures. Yeah, fine. So coming to the part 5, table number 10, 11, 12, 13. Now in table number 10, what is required to be reported? There may be possibility that certain transactions that you have reported in current financial year that was related to the current financial year but reported in the next financial year. That may be possible. How it can be possible? It can be possible by one situation, or multiple situations may also be possible. I'm just giving you one example. I have supplied certain goods to my customer, raised an invoice to that customer, but unfortunately the invoice could not be uploaded on the GSTR portal, GST portal due to any reasons, mistake, avoid ignorance or whatever may be. एक पर्टिकुलर इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट होने से रह गया। कस्टमर ने जब ऑडिट हो रहा था उसका, तब उसने बोला, या हमारा ही ऑडिट हो रहा था, टैक्स पेयर का ऑडिट कर रहे थे, तो पता चला कि आपका जो टर्नओवर बैलेंस शीट का है और जो मंथली रिटर्न्स फाइल किए उससे मैच नहीं कर रहा है। तो व्हाट आइडेंटिफाइड, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि भाई कोई ट्रांजैक्शन था जो रिपोर्ट होने से रह गया है। तो उस केस में क्या किया, आपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि भाई अगस्त 2025 के जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस ऐड कर दो और अगस्त 2025 के 3B में उसका टैक्स पे कर दो। So now this is the scenario. Invoice was dated 31st March 2025, but unfortunately that invoice could not be reported in 24-25 returns, and it has been reported in August 25 GSTR 1 and GSTR 3B returns. So what need to be done? You need to report that invoice here. Say for example, the particular invoice was rupees 1 lakh rupees, in which 9,000 CGST and 9,000 SGST was there. So that 1 lakh rupees is required to be reported here in table number 10. In the same way, if you have reduced any transactions or modified any transaction or amended any transaction in next financial year, and the impact of amendment is reduction in the tax liability, so that you need to report in table number 11. And one thing that we must keep in our mind, that the turnover, the total turnover showing here from the table number 5N plus N plus 10 minus 11, that is the turnover of your outward supply. That turnover must match with the turnover of the books of accounts. That situation must be taken care. ये बात हमको एकदम क्लियर ध्यान में रखनी रहेगी कि जो भी टर्नओवर यहाँ पर हमने अपनी बुक्स में दिखाया है और ये जो टोटल टर्नओवर आ रहा है, ये हमारी बुक से मैच करना चाहिए, और यही टर्नओवर की जो फिगर होती है ये हमारे 9C में रिपोर्ट होती है। तो this is to be taken care. This is to be properly taken care by the professionals. And next part come table number 12 and table number 13.
Table number 12 is basically reporting of ITC for the current financial year that has been reversed in next financial year. There may be possibility कि कोई ITC थी 24-25 की जो कि हमने 25-26 के 3B में आगे जाके रिवर्स कर दी, या कोई ITC थी 24-25 की जो कि 25-26 के 3B में क्लेम कर ली. So that we can report here in table number 12 and 13. We have provided one functionality that ITC carry forward to be from the table 8A, table 8C. तो 8 में हम लोग ये फिगर रिपोर्ट करते हैं 8C में और 8H1 में. तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेम फिगर यहाँ पर आनी है, जस्ट यहाँ पर आप कॉपी करके इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करके कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑटो फेच इसलिए नहीं दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, आप ताकि इसको एक बार क्रॉस चेक करके ही फेच करें, बिकॉज every ITC that is reported in table 8C for carry forward to the next year is not the part of table number 13. ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन जो भी जीएसटी ने रिलीज किए हैं उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है ये. ठीक है, तो टेबल 8C में जो कैरी फॉरवर्ड दिखाते हैं वो केवल कैरी फॉरवर्ड उस सिनेरियो का है जो 2B में तो दिख रहा है, लेकिन आपने 2B में दिख तो रहा है लेकिन आपने क्लेम नेक्स्ट ईयर में किया है. उसका रीजन क्या हो सकता है, करंट फाइनेंशियल ईयर के 2B में था लेकिन हम किसी वजह से क्लेम नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर रहे हैं, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ही 2B में आया लेकिन 8A के अंदर वो ऑटो पॉपुलेट होकर के इसमें दिखाने लगा है तो भी हम वहां पर उसको 8C में दिखाएंगे. बट देयर में भी सर्टेन सिनेरियोज जहां पर कुछ आईटीसी जो 2B के थ्रू फ्लो नहीं होती है लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हमको टेबल 13 में रिपोर्ट करना होगा. इसके लिए जीएसटीएन ने अपने एफएक्यू दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर आपको फिल करनी होती है फिगर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो वॉट एवर द टैक्स लायबिलिटी यू हैव एंटर्ड हियर, जस्ट अगर आपने उसका टैक्स पे कर दिया तो टेबल 14 में आपको क्या करना है, टैक्स पेबल विल कम फ्रॉम दी टेबल नंबर 10 माइनस टेबल नंबर 11. से फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपए यहाँ पर दिखाया तो टेबल नंबर 14 में ये हो जाएगा 8000. एंड इफ यू हैव पेड इट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी, जस्ट पेड में एंटर करेंगे. अगर आपने पे नहीं किया है, सिंपली केवल आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया था बट 3B में पे नहीं किया है तो यहाँ पर पे में टेबल पेड में नहीं आएगा. तो दिस इज बेसिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. Coming to the next part, table number 15, that is still optional table. If you want to report, you can, otherwise it is optional. Table number 15 and 16 is still optional by the government for the current financial year also. So I'm not going into the discussion of the table 15 and 16. Directly coming to the table number 17. So now you can see table number 17, it is a mandatory table. And without filling this mandatory table, you will not be in position to file your GSTR-9. Portal will not allow you to proceed to file your GSTR-9 if you have not filled the figure in table number 17. So table number 17 and table number 18 is for HSN summary of inward supply. This table is still optional for the current financial year also. So if you think that you have complete and accurate data, you can report. But if you think you have no data or still you have data but you don't want to report, गवर्नमेंट ने अगर ऑप्शनल किया है तो आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट जो मैंडेटरी है वो देना रहेगा. सो कमिंग टू द टेबल नंबर 17 फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, टेबल नंबर 17 में फिगर हम लोग कहां से देते हैं. टेबल नंबर 17 में दो चीजें ध्यान रखनी होगी, टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ से ऊपर है. पहला स्टेप, 5 करोड़ से नीचे है अगर टर्नओवर तो आपको 4 डिजिट एचएसएन आपको डिस्प्लेस करने पड़ेंगे. अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट लेवल पे एचएसएन रिपोर्ट करने रहेंगे. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप एचएसएन की टेम्पलेट यहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एचएसएन की टेम्पलेट पे डेटा फिल करके वापस यहां पर इंपोर्ट एचएसएन समरी का ऑप्शन है, इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं. इफ यू हैव फिल्ड द एक्यूरेट एचएसएन समरी in your GSTR-1 returns every month, so we have given an option, just click here and you can fetch the HSN summary data from the GSTR-1. तो आप यहाँ पर GSTR-1 से भी just click here and it will fetch the data from GSTR-1 and data will be auto populated here. So this will provide the complete information of the HSN. But इसमें भी एक छोटा सा issue है. In initial period of GSTR-1 from I think April, May, June, starting के 3 से 4 months में गवर्नमेंट GSTR-1 में कोई वैलिडेशन नहीं था. So whatever entry we were making in GSTR-1, if we are entering wrong GSTN, in few cases we have seen starting में कई लोगों ने जो HSN summary 1 2 3 4 डाल दी तो वो भी ले लिया, कुछ भी
फिगर डाल दी, वो पोर्टल एक्सेप्ट कर लेता था। बट इन सब्सिक्वेंट मंथ्स गवर्नमेंट ने GSTR-1 में वैलिडेशन सेट कर दिया कि ओनली वैलिडेटेड GST HSN कैन बी अपलोडेड ऑन द GSTR-1। सो अगर आपने कोई HSN एकदम एक्यूरेट डाला है तो यहाँ पर एक्यूरेट फेच हो जाएगा और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका HSN इनकरेक्ट था या स्टार्टिंग में वैलिडेशन प्रॉपर नहीं था और आपने गलत अपलोड किए, वन ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट यहां पर पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई एम जस्ट showing you one example. Say here two buttons are given: validate HSN summary and second is validate HSN code. There are two things. HSN summary means the details. Say for example, I have just entered here figure. Now you can see total tax I have reported here for 57 lakh rupees supply is 10 lakh 35,000. And system calculated value is 10 lakh 34,000 and difference is showing 999.99, 1,000 rupees difference is showing. Now what will happen if there will be difference when you click on validate HSN summary? Since there are two records, so difference are showing in just similar. So you can see it has provided two issues. One is difference that is more than 10 rupees, and second error is length of HSN code. So what you need to do, you need to rectify both the errors. Otherwise, portal will not accept this HSN summary. So if the tax calculation difference is more than rupees 10, GST portal will not accept such HSN summary. वो HSN summary अगर 10 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस होगा, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो यू नीड टू मेक करेक्शन एट योर एंड. आपको करेक्शन करना होगा. तो आप जब HSN summary वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा. देखिए दिखा रहा है ना कि HSN summary में डिस्क्रिप्शन डिफरेंस मोर देन 10 रुपीज है, तो यहाँ पर ये इशू दिखा रहा है वो. तो आप यहाँ पर डिफरेंस को रेक्टिफाई करिए एंड टर्नओवर को प्रॉपर रिपोर्ट कर दीजिए कैलकुलेट करके. सो आई हैव जस्ट रिमूविंग दिस डिफरेंस and discussing the second validation. Now still it is showing, it is highlighting that HSN summary. Now you can see it is showing HSN summary 99. It is length should be 4, 6 or 8 digit. I have entered the 5 digit HSN, so that is not acceptable. I am just entering 6 digit HSN. So people will think that 6 digit HSN will be accepted by the portal. So let me show you one thing. I am just verifying HSN from the code. Now you can see I have entered 998300. This is the 6 digit HSN. You can see it is 6 digit HSN, but it is not as per the GST portal master. This is 6 digit HSN. ये HSN 6 डिजिट कोड का तो है, लेकिन ये HSN कोड मैंने 00 लगा करके 6 डिजिट बना तो दिया, लेकिन 6 डिजिट हो जाने से ये वैलिड HSN कोड नहीं हुआ, तो पोर्टल अगेन इसको रिजेक्ट कर देगा. कई बार होता है कि पोर्टल में 8 डिजिट का स्ट्रक्चर है, हमको 6 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, हम उसमें से 8 डिजिट में से लास्ट के 2 डिजिट हटा के 6 डिजिट हमने रिपोर्ट कर दिए थे. बट स्टिल पोर्टल विल से सिंस देयर इज नो आइटम नोटिफाइड फॉर दिस 6 डिजिट, आपने 8 को 6 बना दिया, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पोर्टल विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो व्हाट नीड टू बी डू, यहां पर सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी अवेलेबल है. आप यहां पर आएंगे तो यहां पे देखिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट 99 लिया हुआ है. यहां पर आप क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे और आप जैसे ही यहां पर आप डालेंगे 99, तो आपको 99 से रिलेटेड जितने भी वैलिड HSN कोड्स हैं, सॉफ्टवेयर जो एक्सेप्ट कर, पोर्टल जो एक्सेप्ट करेगा, वो यहां पर आपको दे दिए. तो जैसे यहां पर डाला 83. अब मुझे सपोज करिए 6 डिजिट लेवल रिपोर्ट करना था, तो 6 डिजिट लेवल 00 लगाने से नहीं होगा, क्योंकि 9983 था. 9983 के बाद ये 11, 12, 13, 14, ये अब देखिए यू कैन सी 15, 16 के बाद 17, 18 नहीं है. तो जो गवर्नमेंट का HSN कोड का मास्टर है, SEC कोड का मास्टर है, उसमें वो रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है, तो यहां पर नहीं आ रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चूज the HSN or SEC code only from the government portal master, not from our own choice or own derived or own adding 2 digit extra values. So we need to select only that HSN code that is as per the master, HSN portal master. So thus just click here and you can just click apply changes, HSN value saved. Now you can see all the entries will be updated with the HSN portal, GST portal HSN master. Now you can see you will not encounter any error. All HSN codes are valid as per the
HSN master data. So this is the simple HSN error that lot of people are facing. So if you know the exact requirement of the government, that will clear your doubt in every situation. Okay, I hope you got this point. And if you have find any error in the HSN code and you have rectified it, you need not to upload the entire data. Just you can partially upload the HSN summary portion only. You just click here and it will upload the HSN summary data, not the entire GSTR-9 working. It will only upload the HSN summary. So once it is software 9 uploaded successfully. Okay, so this can be, we can see the status also. So it is showing the current date, time, and process success. If you want, I can just show you the error. If I have entered this 00, software is validating it, but portal code master is not validating. It is showing error. But in spite of having this error, if I will upload this HSN summary, now what will happen? It will not accept. It is showing processed with errors. You can see it is showing processed with errors. It will generate the error file. It will take 10 to 15 minutes to generate the error file. You will see what is the error, then you can check and you can modify. Before, otherwise, what you can do, you can just made the corrections as per the functionalities available in the software 9983, and I have just selected the correct code, then applied, okay, save. Now when I upload, it will process. It has been uploaded. Now you can see it is showing process. So error is still in process of generating with the last uploaded JSON, but you can see the latest uploaded JSON with the correct HSN will save your time and your efforts, team efforts. So please make sure whatever the validations are provided in the software, you must try it. Still after entire validation, still you are encountering any issue or any error, then we need to check the data, because in various government is continuously updating the portal time to time, and sometimes they change the validation rules internally without updating the information. So in case you encountered any error in spite of validating both the buttons, still you are getting the HSN error, then you can raise a ticket. You can contact the customer team for the understanding, and if we found the solution, we will definitely implement that validation in the software, so that before uploading you can find the errors. The purpose is the same. Okay, so this is the part that has been completed, HSN summary. Now coming to the most important part, that is the computation. That first of all, I would like to let you know one thing, that computation is not available on the portal. That computation is available in the software for the understanding of the professionals. आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी एक वर्किंग के लिए है, आपकी कैलकुलेशंस के लिए है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आपने 9 फिल किया है, उसका आपके 3B के साथ क्या इम्प्लीकेशन है, बिकॉज 3B इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि जो भी डेटा पोर्टल पर जाता है वो जाता 3B के थ्रू है. 3B इज वेरी क्रूशियल. इन द सेम वे, सेकेंड थिंग, जो भी आपने अपनी बुक्स बनाई है, बुक्स का भी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा, तो वो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए. नाउ coming to this, I have just imported here. It is showing in the computation outward supply as per 3B. Just click here. It will fetch the data from the annual 3B. Whatever the data is updated in annual 3B PDF provided by the government, it will fetch here. Now you can see it is showing annual 3B. If you have already reversed the ITC, sorry, if you have already reported the table number 10 or 11 in last financial year, just you can fetch here. Otherwise, you can just enter it manually. Functionality is available for manual entry also. Now you can see as per the value of the 3B is this one. Now here it is provided just for your understanding, your working purpose, so that you can understand whether the books and the returns data are matching or not, whether there is any discrepancy or not. So you can just enter here manual entry your books data. So I'm just presuming that I have my data in the books like this. So I'm just copy paste. You need not to enter. So in this software, we have provided very good functionality. Lot of users are not aware that they type the values manually. You need not to type it. You can just even copy paste from your Excel file. I'm just showing you. If you have any data in the Excel file,
you can just copy paste from the Excel. Just select the rows, copy the Excel and paste here. It will work like your Excel workbook wherever the copy paste functionality is available. Okay, so need not to worry. Coming to the just explanation part of this computation. So whatever the computation is showing, you need to enter the value as per your books of account. This is the manual entry because we have no access to your books of account. So we are not going to access your tally. So you need to enter the books data manually. Okay, so now it is showing the difference between the books and 3B. First, it is showing the difference between the books and 3B. It is showing the difference between books and 3B. What you need to do, that is to be decided by you whether turnover of this 70 lakh rupees as per books was as per books, but in last financial 24-25 3B it was short reported. But okay, fine, there can be difference. This difference, how you have settled your difference in your GSTR-9. So now you can see total turnover reported in GSTR-9. So how it is coming? It is coming from the 5N. Table number 5N comes from the table 4 and 5 and 4G. So you can see it is showing 69 lakh rupees. So that is as per the 3B also. But you have reported in table number 10 that transaction of current financial year reported in next financial year. So just entered here. If you have entered in table number 10, it will auto populate. So now you can see the total turnover as per GSTR-9 is this. Now this computation is showing difference between the books of accounts versus GSTR-9. Earlier, here the difference was difference in serial number 6. It was the difference between books of accounts and 3B. There can be difference, but while finalization of our annual return, how we have addressed the difference between books and 3B. If we have addressed our difference between books and 3B through the annual return, so this difference should come to an end and there should be zero. In spite of this, if you have any difference, then you must have reasons for those difference. अगर यहाँ पर जो टेबल ये जो सीरियल नंबर 11 है, यहाँ पर क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? There is a simple attempt to show that there is a difference between books and 9, because ultimately when department will raise the queries, he will ask for the books of account. Department will conduct the audit, they will ask for the books of accounts. तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ही आपसे बात करेंगे. तो ये चीज आपको केयरफुली ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 9 का डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द बुक्स एंड your GSTR-9. Coming to the next ITC part. In the ITC part, what is to be done, that input tax credit reconciliation section. In this portion, we have entered the ITC as per GSTR 3B first. तो देखिए हम लोग का इसमें ट्राई क्या किया, we have tried our level best. पहले आप 3B और बुक्स को कंपेयर करिए. 3B और बुक्स का डिफरेंस है या नहीं है, उसको आपने 9 में कैसे बुक्स और 9 को कैसे एड्रेस किया है. तो 3B और बुक्स का डिफरेंस यहाँ पर पहले आ गया. ठीक है. अब आप यहाँ पर अपनी ITC एज पर 3B आप डाल दीजिए. तो अगर आप ITC एज पर 3B आप डाल देते हैं तो ये फिगर आपकी ITC एज पर 3B यहाँ पर आ जाती है. ठीक है. तो यहाँ डिफरेंस अगर नहीं है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपके पास आपकी बुक्स में सपोज करिए ये ITC थी 25, ये ITC आपकी थी, तो बुक्स और 3B के बीच में 6000 का डिफरेंस आ रहा है कि आपकी बुक्स के हिसाब से ITC 6000 रुपीज एक्स्ट्रा है, जबकि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो 3B में क्लेम किया वो कम क्लेम किया हुआ है. ठीक है. तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. नंबर 1 रीजन क्या हो सकता है कि आपने जो ITC 6000 रुपए यहाँ पर बुक्स में ज्यादा दिख रही है, दैट मे बी पॉसिबल कि वो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करी हो. ठीक है. तो वो अगर आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करी है तो आपको उस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी. तो यहाँ पर ये पहला जब यहाँ पर डिफरेंस आया तो अब आपको क्या करना है, जस्ट नीड टू चेक कि 9 में क्या 3B में ITC रिपोर्ट करी है. ये 9 में जो रिपोर्ट करते हैं वो आता है कहां से, यहाँ पर दिखाया टेबल नंबर 7J. 7J इज बेसिकली द ITC क्लेम्ड 6O में जो आ रही है माइनस 7I. 7I मींस रिवर्सल. तो क्लेम्ड और रिवर्सल के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको रिपोर्ट करना होगा. टेबल नंबर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होता है, ये एडिटेबल नहीं है, ये पीछे 7J से उठ के आता है. तो अब यहाँ पर आपको दिखता है अगर 7J, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर मेरा 9 में
9 के अंदर आईटीसी अपलोड करने से रह गया। उन्होंने क्या सोचा कि 6A में जो आ रहा है वही मेरा आईटीसी है, उन्होंने ब्रेकअप ही नहीं प्रोवाइड किया। एवरी ईयर आई हैव एनकाउंटर्ड दिस क्वेरी फ्रॉम वेरियस यूजर्स। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या करें। सर अगर फाइल कर चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। फाइल करने से पहले आप यहाँ पर देख लो ना कि आपका यहाँ पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या बुक से इतना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है क्या कोई। अगर आ रहा है तो देयर इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। तो आपको यहाँ पर मेक श्योर ये क्या करना है कि अगर आपका कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको इसको प्रॉपर सेटल करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए 25 में डालता हूं, ठीक है। सपोज ये हम वापस आते हैं कंप्यूटेशन पे कि हमने ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी जो 9 में दिखाई है वो आई दिखाई है इतनी, और फिर हमने टेबल 8 में क्या दिखाई है वो भी ले लेते हैं। एक जस्ट करेक्ट रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। टेबल 8 में 19,622 और पार्ट 5 में भी हम आते हैं तो यहाँ पर हमने पार्ट 5 की आईटीसी भी फिल कर दी टेबल नंबर 13 में। जस्ट कॉपी पेस्ट एंड कम टू द कंप्यूटेशन। नाउ यू विल सी इन द कंप्यूटेशन सेक्शन, ये पहले हमारे पास रिकंसिलिएशन में इतना डिफरेंस था, ठीक है। अब हमारे पास ये आ रहा है कि आपने 2B में जो क्लेम किया वो, सॉरी 9 में जो दिखाया वो उतना ही दिखाया जितना आपने बुक्स में 3B में किया। तो बुक्स में जो आ रही है एक्स्ट्रा उसमें 6,000 इसमें भी एक्स्ट्रा आ रही है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो बुक्स में एक्स्ट्रा आ रही है वो एक्स्ट्रा बुक है, रॉन्गली बुक है, तो वो आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी होगी। तो दिस कैन बी अ प्रॉपर आईटीसी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जहां पर इस कंप्यूटेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कोई अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो सामने दिख जाए। देयर मे बी अनदर पॉसिबिलिटी दैट lot of professionals are making their own computation, own calculations, own working, और वो उस वर्किंग से ये कंप्यूटेशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो सर यहाँ पर हमने आपको पूरा रेफरेंस दिया कि ये कंप्यूटेशन हम बना कैसे रहे हैं। ये कंप्यूटेशन वाइडली यूज्ड बाय लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स है, मतलब हमारे मोस्टली यूजर्स इस कंप्यूटेशन को यूज करते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इससे कई बार उनको जो उनके इश्यूज थे सामने दिख गए, नजर में आ गए। कई बार होता है फिल कर दिया स्टाफ ने, लेकिन जो मोस्टली ये क्या होता है कि स्टाफ डेटा फिल करता है और जो उनके सीनियर्स हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो कंप्यूटेशन देख करके फाइनलाइज करते हैं। तो कंप्यूटेशन में इनको कई बार रेड फ्लैग दिखा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो पूछा तो डिफरेंस सॉर्ट आउट किया तो वो चीजें क्लोज हो गई। अगर आपका कोई अलग तरीके का कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है, आपकी कोई अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, दैट कैन बी सो, उसके लिए आपको फिर एक अपना अगर कोई है तो वो आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। बट जो यहाँ पर है वो चूंकि टेबल से हमने लिंक किया हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर नीचे दूसरा एक पार्ट दिया हुआ है जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका पर्पस ये है कि आप अपनी बुक्स की ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट डालिए। तो मान लीजिए हमने बुक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट सपोज 0 ही थी, ठीक है। तो ये देखिए पहले क्या पे क्या आ रही है, टेबल नंबर 6A से आ रही है, A1 से आ रही है और ऊपर 21 से आ रही है। फिर यहाँ पर टोटल आईटीसी अवेलेबल आपके पास कितनी है, उसमें से आपकी कितनी आईटीसी ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज हुई। ये यूटिलाइज्ड कहां से आ रहा है, फ्रॉम टेबल नंबर 9 जो पेड थ्रू आईटीसी सेक्शन होता है, ये वहां से उठाता है। ये टेबल नंबर 9 पेड थ्रू आईटीसी से आ रहा है। तो जो टेबल नंबर 9 पेड थ्रू आईटीसी से आ रहा है ये उसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैच कर जाए एक बार हमारा, ठीक है। हाँ, तो टेबल नंबर ये देखिए यहाँ पर आएगा टेबल नंबर 9 से कि उसकी फिगर यहाँ से उठ के आएगी। अब अगर आपके पास मान लीजिए कोई आईटीसी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली एज पर बुक्स होना चाहिए, ठीक है। ये बुक्स की ओपनिंग डाली, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर पोर्टल पर कितना आपने क्लेम किया, कितना यूटिलाइज किया और बुक्स के हिसाब से क्या बचा। यहाँ पर ये बुक्स के हिसाब से ये मैच आपकी बुक से करना चाहिए। यहाँ पर ये जो 28 नंबर पे दिया है ये बेसिकली पर्पस इसका ये है कि ये पोर्टल पर मार्च का रिटर्न फाइल करने के बाद क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना बचा ये वो दिखाने के लिए है। हो सकता है ये आपका मैच कर जाए, मे भी पॉसिबल है कि मैच ना करे, बिकॉज अगर बुक्स में आपने प्रॉपर क्लोजिंग एंट्रीज डाली होंगी
तो ये फिगर आपका इससे मैच करेगा। यहाँ पर इसको देने के पीछे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको अगर ये डिफरेंसेस दिखते हैं देन यू नीड टू जस्ट क्रॉस चेक। आपको ये क्रॉस चेक करना है और क्रॉस चेक करके आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो आप उसको क्रॉस चेक करके प्रोसीड करिए। तो दिस इज बेसिक पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, और ये कंप्यूटेशन आप एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। और आपको लगता है इफ यू वांट टू मॉडिफाई एनी फील्ड और एनी फिगर, जस्ट एक्सपोर्ट इन एक्सेल, मॉडिफाई एज पर योर नीड एंड प्रोसीड विद योर। Okay, so this is the computation part. Coming to the next GSTR-9 observation. ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन देने के पीछे एक छोटा सा केवल ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो 9 फाइल कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन वाला जो पोर्शन है, ये हमने ट्राई किया है कि आपके GSTR-9 को आपकी GSTR-3B की टेबल से कैसे लिंक कर दें। तो किस टेबल 3B की कौन सी टेबल से डेटा आता है और 9 की कौन कौन सी टेबल्स में वो लिंक्ड है। रीजन बिंग ये भी पोर्टल का पार्ट नहीं है, ये भी जस्ट एक प्रोफेशनल्स को दिया गया है, कंपनीज को दिया गया है सॉफ्टवेयर में, कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लो कि 9 और 3B में कहीं कोई डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस आपको दिखता है तो जस्ट पहले फेच करेंगे डाउनलोड। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर ये डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कोई डिफरेंस दिखता है, सपोज ये से यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है, मैंने पीछे इंटेंशनली डिफरेंस फिल किया था। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है अगर, और वो डिफरेंस आपको नोन है, ये जिससे यहाँ पर टेबल नंबर 5N और 11 में, 3B में तो करंट ईयर का ही फिगर आ रही होगी। अब हमने 9 जब भरा तो उसमें हमने बताया कि 9 में करंट ईयर का ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में हमने पे किया है। डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो आप अपने रिमार्क्स में डाल लीजिए, अपनी नॉलेज के लिए, याददाश्त के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दिस इज रिपोर्टेड इन नेक्स्ट ईयर 3B and 1 and properly reported in table 10 of GSTR-9। तो ये आपने यहाँ पर रखा, इसको सेव कर दिया, एंड ये आपके पास जब भी नेक्स्ट टाइम आप कभी खोलेंगे इसको, तो ये आपको अवेलेबल होगा आपके रेफरेंस के लिए। जब भी आपको ये नीचे डिफरेंस दिखा तो यहाँ पर आप अपना रिमार्क्स डाल के रख लीजिए कि ये रिमार्क्स में हमने ये डिफरेंस था, लेकिन इस डिफरेंस को कैसे हमने सॉर्ट आउट किया। ये आप एक्सेल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका, तो ये आप उसको एक्सेल पर भी चेक कर सकते हैं। ये नीचे आपको इस तरीके से मिल जाता है एक्सेल पे भी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द पार्ट। इन द सेम वे आईटीसी ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है कि आईटीसी की जो फिगर्स आपने डाली हैं वो कहाँ कहाँ डाली हैं। 6F में डाली है, तो जैसे ये इंपोर्ट की आईटीसी है। 3B में आपने यहाँ पर मान लीजिए 3B में नहीं क्लेम कर पाए थे, व्हाटएवर, यहाँ पर आप अपना रिमार्क्स डाल के जो भी डिफरेंस है अपनी याददाश्त के लिए आप रख सकते हैं, ताकि कभी डिपार्टमेंट फ्यूचर में आपका ऑडिट करे, क्वेरी करे, तो आप उसका याददाश्त के लिए आपके पास होगा। So this is the complete walkthrough of the GSTR-9 with the computations and with the observation portion। तो ये यहाँ पर हमारा 9 का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें एक कुछ क्वेरीज हम लोग ले लेते हैं जो मेरे पास हैं, मे भी हो सकता है उससे आप में से कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं जस्ट एक क्वेरी और विद लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक बार अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम फिट होती है देन यू कैन ट्राई जस्ट चेक इट आउट। तो सबसे पहले मैं अपना पूरा डेटा इस पर पोर्टल ही कर लेता हूं। तो पहले हम 1 के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, okay, fine. So now you can see as per this GSTR-9, the turnover of party is 69 lakh rupees. You can see turnover is 69 lakh rupees and total tax liability is 12,42,000। सब्सिक्वेंटली ये पता चला बाद में कि इस कंपनी का 1 लाख रुपए के कोई ट्रांजैक्शन थी, जो कि नेक्स्ट ईयर में हमने 3B में रिपोर्ट कर दी थी, 1 में रिपोर्ट कर दी थी। तो वेयर दिस ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, तो सिंपली इसको हम क्या पे रिपोर्ट करेंगे, GSTR-9 के टेबल नंबर 10 में जाएंगे, और ये 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया, इसका 9,000 CGST, 9,000 SGST। सो नाउ यू कैन सी कि आपकी बुक्स का टर्नओवर 70 लाख रुपीस था, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, बट ये जो ऑटो पॉपुलेटेड 3B1 से जो डेटा आ रहा है वो 69 लाख आ रहा है। तो क्या पता चला कि इसका हमने 1 लाख रुपए का कोई इनवॉइस था, जो कि हमने अगले साल के 1 और 3B में ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है।
तो अगर कर रखा है तो आपको कहां पे जाना है, टेबल नंबर 10 पे जाना है, 1 और ये टेबल नंबर 10 में फिगर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये जो टर्नओवर है आपका, ये 70 लाख रुपीस और ये टैक्स लायबिलिटी है आपकी बुक से एक्यूरेटली मैच कर जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप जब यहां पर आपने इसको मैं हटा देता हूं अगेन जस्ट क्लैरिटी के लिए, आपने यहाँ पे देखा ये टर्नओवर यहाँ पे 69 लाख रुपीस दिख रहा है, बट वेयर एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज ओनली 65 लाख रुपीस। हाउ इट इज सो? 5 लाख रुपए यहाँ ज्यादा दिख रहा है। तो क्या पता चला कि एक क्रेडिट नोट, एक पर्टिकुलर क्रेडिट नोट इस जो फाइनेंशियल ईयर का था 24-25 का था, बट दैट क्रेडिट नोट वाज रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कहीं पर भी रिपोर्ट कर दिया था, तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स में रिपोर्टेड हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा? इन दैट केस व्हाट नीड टू डू, आपको उस केस में जो यहाँ पर क्रेडिट नोट यहाँ पर रिपोर्टेड है, आप यहाँ पर जाएंगे टेबल नंबर 5 पे और यहाँ पर आप अपना 5 लाख रुपीस का क्रेडिट नोट यहाँ पर डाल देंगे और ये यहाँ पर 90,000 रुपए जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पर आपका टर्नओवर 64 लाख रुपीस हो गया। दैट टर्नओवर शुड मैच विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये पहले दो सिनेरियोस कवर होते हैं हमारे कि कम था आगे कर दिया, ज्यादा कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड यूनिक सिनेरियो, आपने इस फर्म का सपोज करिए कि आपके पास जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई तो आपने देखा टर्नओवर 69 लाख रुपीस एज पर 3B और 1 आ रहा है। आपने जब बैलेंस शीट देखी तो वहां पर टर्नओवर दिख रहा था आपको 75 लाख रुपीस। आपने पार्टी से पूछा कि क्या इस टर्नओवर को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने रिपोर्ट किया है, किस मंथ में रिपोर्ट किया है आपने इस टर्नओवर को, हाउ इट इज रिपोर्टेड, how it is reported in the turnover. So just for understanding, this turnover was reported, if had it been reported, that should be part of table number 10 or 11, but it was never reported at all in any tables. This is the unique case. This turnover was never reported at all in any of the tables. So how to report this scenario, how to report this transaction, and how to report this transaction in 9 as well as in 9C? So as per my humble understanding and humble opinion, what we need to do, we need to report this transaction in B2B or B2C as the case may be of the current finance. There may be two opinions. I'm sharing both the opinions. Whatever you feel good or you feel better, you can decide, because there is no any documented thing. But as per my opinion, what should be done in both the scenarios? Number one, if turnover was reported short by 6 lakh rupees, then situation number one can be, we need to add that in B2B or B2C as the case may be. So I'm just adding this 6 lakh rupees in B2B. So now you can see I have just added 6 lakh rupees and my turnover is 75 lakh rupees. And for the 6 lakh rupees, I'm just entering the tax liability, say so for 6 lakh rupees, it is coming 54,450. I'm just saving it. Now you can see the turnover is matching with the books of accounts since it was never reported in 1 or 3B of next financial year. That's why I am just giving my humble opinion to add this in regular transactions. Okay, so what you need to do, just add it here and tax liability add here and come to the part 4 and fetch the tax payable data. So here the tax payable data will auto populated from this word. When you click on fetch, it will auto populate it. Otherwise by default it is not coming. When you need to just click on this button, so it will fetch from the table number 4N. Now you can see it is showing the difference, 54,000 difference in CGST and 54,000 difference in SGST. So in that case, since it was never reported in 1 and 3B, what you need to do, you can just report this here in this portion and add the tax liability in this portion and just open the DRC03 and file this DRC03. Just click here and simply, other than RCM, you just need to select the period. Add here. So functionality to fill the DRC is automatically given in the software itself. Just click and
close. So what you need to do, you need to add the transaction in table number 4, come to the table number 4, come to the table number 9, increase the tax payable data. Here it will show the difference between the tax paid and tax payable 54,000, and then you need to create a DRC and file the GSTR-9 with this figure. And you will be filing the GSTR-9C with the correct figure, and in 9 and 9C there will not be any difference. That will settle your point. This is the one opinion. Second opinion can be, do not change the data here. You need not to change the data here. You need to file the data here as per your convenience, as per the auto populated figure, whatever showing here, and come to the table 4. There will not be any difference here. There will not be any difference, but the difference whatever is showing, that is required to be reported in table number 9 of GSTR-9C. So in table GSTR-9C, there will be the difference between tax as per 9C. You need to report in 9C then. In that case, you need to report in 9C. 9C will be showing the higher value of the tax liability and 9 will be showing lesser value. And in 9C, include the reason. In 9C, include the reason for the difference and mention that the tax liability has been reported, could not be reported in GST returns in the current or next financial year, though at the time of filing of GSTR-9C, it has been identified and reported and tax has been paid through DRC 03 with reference number so and so. So I feel both the options are available. If you want to disclose in the 9C, then you should disclose in the 9C like this. If you are not required to file 9C, then you should opt this option in 9C. So, okay. So I hope this will clarify your doubt regarding reporting of the GSTR-9 turnover related figures, if there is any discrepancy you have identified. Coming to the next part, in GSTR-9C, sorry, GSTR-9, in GSTR-9 second portion is that the people face difficulty regarding RCM related transactions, input supplies on which tax to be paid on reverse charge basis. Now, in this case, what is required when input tax credit related to reverse charge, there is a requirement to report it in GSTR-9, but as per the clarification issued by the government in 2019, that has been reiterated in current year FAQ by the GSTN, that if you have any figure that is required to be reported, if you have any figure that is required to be reported in GSTR-9 for the RCM related transaction, the liability as well as input tax credit relating to the RCM to be reported in that financial year GSTR-9 in which it was actually paid. Meaning thereby, इसको अगर एग्जांपल से हम कवर करें, RCM liability for the financial year 24-25 in the books of accounts was rupees 10 lakh rupees. Whereas in the current financial year GSTR 3B, it was paid for 9 lakh. 1 lakh rupees could not be paid due to any reason. I'm not going into the reasons. Due to any reasons. So 3B paid 9 lakh rupees. ITC claimed for the paid is 9 lakh rupees. But as per books, 10 lakh rupees. What is to be done? How to report it? So in that case, you need to report here in table number 4G, that is 9 lakh only. Whatever you have paid in GSTR 3B only. तो जो भी आपने 3B में पे किया है, बुक्स का यहाँ पे 9 में नहीं रिपोर्ट करना है, बुक्स का 9 में रिपोर्टिंग नहीं होनी है. RCM के लिए whatever you have paid through 3B to be reported in 9 only. Fine. And ITC भी जो 9 3B में रिपोर्ट करी है वो आपको 9 में रिपोर्ट करनी रहेगी, इसका कोई चेंज नहीं होगा. बट 1 लाख रुपए चूंकि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, तो जो 1 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर में पे किया है, तो दैट नीड टू बी रिपोर्टेड इन 9 ऑफ 25-26 ओनली. तो वो आपको 25-26 के 9 में रिपोर्ट करना होगा along with the 25-26 अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ RCM. तो उनके साथ क्लब करके, तो इसका सिंपल सा फंडा है RCM रिपोर्टिंग का. क्या 3B में रिपोर्टेड है? इफ यस, whatever value reported in 3B is to be reported in 9. That is the simple answer for RCM related transactions reporting. But when department will audit in future for the firms, what will be the scenario? How we will justify it?
अगर डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, नॉर्मली डिपार्टमेंट बड़ी फर्म्स का ऑडिट करता है जहां पे टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो इसमें मेरा एक हम्बल सजेशन या ओपिनियन कह लीजिए, वो ये है कि 9C फिल करते समय, चूंकि बिकॉज वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट, GSTR-9 is basically the breakup of the 3B and 1 you have already filed. Whereas 9C is the reconciliation between your books of accounts and your annual return. 9C is reconciliation of books of accounts and annual return. Whereas 9 is breakup of 1 or 3B. 9C is breakup, 9C क्या है? Reconciliation है books और 9 के बीच का। तो 9 में आपने 9 लाख रुपीस यहाँ पे आरसीएम की लाइबिलिटी शो करी है, बुक्स के हिसाब से 10 लाख आ रही है। इन माय हम्बल सजेशन एंड हम्बल ओपिनियन, you should report the as per books in 9C. This 9 lakh rupees will be auto populated from the 9 in 9C. वो 9C से auto populate होके वहां पहुंचेगा, टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी होगी टोटल में इंक्लूड होकर के पहुंचेगी। There will be difference between the 9C and 9. You can justify or explain the difference in the reason section that RCM liability of rupees 1 lakh rupees on rupees 1 lakh rupees is relating to the current financial year books of accounts, but due to inadvertent reasons or whatever reasons may be, could not be reported in 3B and is not reported in 9, though it has been paid through GSTR 3B of the next financial year. और जिस भी मंथ का है उस मंथ में उसको आप डिस्क्लोज कर दीजिए, मंथ की मंथ डिस्क्लोज कर दीजिए किस मंथ में किया है, that can justify your situation. So by this you can clarify your reporting requirement of RCM related transactions. I hope this will clear your doubt at all relating to outward supply RCM transactions. Now coming to the most critical part relating to the input tax credit. Now input tax credit related reporting and the situations that are coming. If you are having the input tax credit, in this example, it is input tax credit of 2,19,000, and this 2,19,000 includes the previous year input tax credit, that is 19,622. So we need to enter here, and I have already discussed this point earlier in my deliberation in starting, that अगर आपने कोई भी पिछले साल की आईटीसी नहीं आपने जो भी क्लेम करी, whatever you have claimed but could not be reported in last financial year GSTR-9 due to non applicability of GSTR-9, due to any mistake on GSTR-9, whatever reasons may be, if carry forward is not reported in GSTR-9 table 8C or table number 13, in my humble opinion it should be reported in table 6A1. अगर नहीं रिपोर्ट किया है पिछले साल तो हम ये सोच करके नहीं जाएंगे कि नहीं साहब पिछले साल तो रिपोर्ट नहीं किया, डिपार्टमेंट पिछले साल की क्लोजिंग को इस साल की ओपनिंग से मैच करेगा, बिल्कुल कर सकता है मैच, उसको करने से तो नहीं रोक सकते। लेकिन लास्ट ईयर गलत किया है और इस साल भी हम गलत कर दें तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि इसका जजमेंट केस टू केस बेसिस पे लिया जाएगा कि रिपोर्टिंग जो भी गलत हुई है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो आपका प्रोफेशनल जजमेंट होगा कि आपको मैच कराना है या आपको एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है। उसके इम्प्लीकेशंस हर एक केस टू केस बेसिस पे डिफरेंट हो सकते हैं। बट अगर आपकी कोई भी आईटीसी है वो अगर पिछले साल से ज्यादा की अगर थी तो यू नीड टू रिपोर्ट हियर इन टेबल 6A1। अगर वो पीछे मिस हो गई है तो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है इसका कि आपका जो भी रिवर्सल किया है आपने ड्यूरिंग द पीरियड में, रिवर्सल किए हैं, रिवर्सल रिलेटिंग टू दी वॉट एवर टेम्परेरी रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल, देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर्सल देयर इन GSTR-9। तो 3B में भी हम दो कॉलम में 4B1 और 4B2 में रिवर्सल्स रिपोर्ट करते थे। सो वॉट एवर रिवर्सल रिपोर्टेड इन 3B, इफ वी आर रिपोर्टिंग एनी रिवर्सल इन GSTR-3B, तो कोई भी अगर रिवर्सल हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो रिवर्सल जो भी हम रिपोर्ट करेंगे दैट नीड टू बी प्रॉपरली एड्रेस्ड इन टेबल नंबर 7। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सर, इफ एनी रिवर्सल दैट हैज बीन मेड in the current financial year but it has been reclaimed in next financial year, there is maybe question, sir, I have claimed the input tax credit from one party but could not make the payment to that party within 180 days. So as per the requirement of rule number 37, I have reversed the ITC under temporary reversal column 4B2 reversal others may. So how to report this scenario? Say for example, in this case, I'm just showing you one case. Say this is my total ITC
ओके, सो आई हैव जस्ट रिपोर्टेड दिस आईटीसी हियर। तो जो भी आईटीसी आपने क्लेम करी थी वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, भले ही वो आप रिवर्स कर चुके हैं बाद में, ड्यूरिंग द ईयर ही आपने रिवर्स किया है, बट यू नीड टू रिपोर्ट हियर इन टेबल नंबर 6B। यू नीड टू रिपोर्ट हियर, सो यू हैव रिपोर्टेड हियर टेबल नंबर 6B कि एक पार्टी का इनवॉइस था और उस पार्टी का इनवॉइस मान लेते हैं, एक सेकेंड, just for clarity and simplicity, I'm taking the rounding of figures and just mentioning 19,622. Okay, I have one party from whom I have taken the input services and I have not made the payment to that party for 19,622 rupees. 19,622 का ITC मैंने क्लेम कर लिया था लेकिन उस पार्टी का पेमेंट नहीं किया. हाउ टू रिपोर्ट दिस ट्रांजेक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ITC must be mentioned in table number 6B in the part for which it is applicable. If it is applicable in input, capital goods, input service, as the case may be, it should be included here. Okay, first point. Second point, it should be included here. And second point, if you have reversed it, then you need to mention in rule number 37 that I have reversed the ITC due to non-payment within 180 days. So I have just mentioned it, reversal 19,622. Okay, so I have entered 19,622 reversal in rule number 37 column. Now, you can see as per my 3B, total ITC was 2,19,000 for which I have given the breakup and I have entered 19,000 has been reversed. So my net ITC was 2 lakh rupees. 19,000 is in temporary reversal ledger, not in the normal ledger, but it will be in temporary reversal ledger. Now you can see what will be the implication of this reversal. Now the question arises, as per the provision, we can claim this ITC in subsequent financial year whenever whenever this ITC, जब भी ये ITC हम फ्यूचर में क्लेम करेंगे तो ये ITC पेमेंट करेंगे उस पार्टी का, ये ITC हम क्लेम कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली वी कैन क्लेम इट. जब भी हम करेंगे इसका हम रिवर्सल क्लेम कर सकते हैं, दैट इज फाइन. लेकिन पॉइंट आता है, क्या इसको हम टेबल 8C में रिपोर्ट करेंगे? क्या विल इट बी रिपोर्टेड इन टेबल 8C? तो फर्स्ट आंसर इज नो. व्हाई नो? लेट अस सी. In table 8B, my total ITC was 2,19,000. I have given the breakup 2 lakh rupees input and 19,622 was input service for which I have not made the payment and then reversed in table number 7. Table number 7, I have reversed it. But this ITC I will claim in future, but it will not be reported in table number 8C. Why it is not required to be reported in table 8C? Simple reason, sir. It is not required to be reported in table 8C because it is already claimed. And table 8C is basically those ITC carry forward which we could not claim, in the current year 3B. So since it is, you can see it is auto populated from 6B, so it will not be reported here in table 8C. If you report it, it will create a difference and unnecessary, it will increase the litigation. And government has meticulously clarified this thing in the FAQ issued for this purpose. So in my humble opinion, this is not required to be reported in table 8C. Again, now the question arises whether this ITC that is to be reclaimed in future is required to be reported in table number 13. This ITC reported reclaimed in future is required to be reported in table number 13. Yes or no? To clarify this, government has already clarified this point also. If any ITC which can be reclaimed in future, which is reversed and can be reclaimed in future, and if it is relating to rule 37 or 37A, 37 और 37A का सर इसमें क्या सिंपल सा प्रोविजन है कि जैसे नॉर्मली बाकी सभी आईटीसी के लिए क्या प्रोविजन होता है कि जो आईटीसी हमने क्लेम करी है उसके लिए टाइमलाइन, डेडलाइन तय है. अगर हमने आईटीसी रिवर्स करी है या क्लेम करी है व्हाटएवर और रिवर्स करके वापस से क्लेम करनी है, हर एक के लिए टाइमलाइन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर मंथ के रिटर्न में, जो कि 30 नवंबर तक हम क्लेम कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. करेक्ट. पॉइंट इज, क्या ये जो रूल 37 का रिवर्सल है इसमें कोई टाइमलाइन लागू होती है? इफ यू रिफर द प्रोविजन ऑफ रूल, if you refer the provision of section 16 second proviso, it says
If ITC is reversed due to non-payment within 180 days, such ITC is required to be claimed when the payment to the party is made. आप जब भी पार्टी को पेमेंट करेंगे आप उसको क्लेम कर सकते हैं, एंड द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 16(4) विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दिस रीक्लेम। तो जो 16(4) की टाइम लिमिट है इस पे लागू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीक्लेम हम रिवर्सल वाला रीक्लेम फ्यूचर में करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि अगले साल ही कर लें, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई हैं। दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी section 16 proviso as well as in the clarification FAQ issued by the GSTN। तो गवर्नमेंट ने जो FAQ इशू किया है उसमें भी बहुत कैटेगरीली ये मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आईटीसी ऐसी है जिसको कि आप रिक्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में और उसके ऊपर कोई समय की बंदिश नहीं है, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 8C एज वेल एज टेबल नंबर 13। आपको टेबल 13 में भी वो आईटीसी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ टेबल नंबर 13 इज आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो 37 की आईटीसी हमें केवल अगले साल में ही क्लेम नहीं कर लेनी होती है, हम इसको आगे भी क्लेम कर सकते हैं जब भी पेमेंट करें, तो वो टेबल 13 में भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पॉइंट आता है, ये बात आपको एफएक्यू जो यहां पर देखेंगे आप, इसमें एफएक्यू में दिया भी होगा। आई विल जस्ट ओपन दिस एफएक्यू। This one you can see it is clearly mentioned, if ITC which was reclaimed in financial year reasons of rule 37, such reclaim will be reported in table 6H of GSTR-9 and this is not to be reported in table 13 of GSTR-9 of 24-25। So you can see अगर 37 rule 37 की कोई ITC है तो वो टेबल 13 में रिपोर्ट नहीं करनी है और 8C में तो आनी ही नहीं है। 8C में इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ 8C और 37 की आईटीसी 13 में सॉरी रूल 37 की आईटीसी टेबल नंबर 13 में भी रिपोर्टेबल नहीं होगी। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब भी आगे के फ्यूचर ईयर में जब भी आप क्लेम करोगे तो ये कहां रिपोर्ट करोगे, तो ये कहता है इसको आपको 6A1 में रिपोर्ट नहीं करना है, इट इज टू बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6H। ये आपको टेबल नंबर 6H में रिपोर्ट करना रहेगा। सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस टेबल नंबर 6H and reading the language. This is the table number 6H, amount of ITC reclaimed under the provisions of the act। So it is reclaimable ITC, जो भी आपकी reclaimed वाली ITC है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। So with this I hope I could clarify the scenarios of your GSTR-9 and this is the complete overview of the GSTR-9 and with the different scenarios। Coming to the 9C, 9C is not very complex. I'm just going through the 9C. 9C is very simple form. It is simply the reconciliation of the books of accounts with the turnover। So now you can, yes, and GSTR-9C में भी कोई खास चेंज करंट ईयर में नहीं आया एक्सेप्ट फ्यू माइनर चेंजेस। तो 9C में यहाँ पर आपको टर्नओवर सिंपली फिल करना रहेगा अपना, whatever the turnover you have। Okay, this figure, the turnover of declared in 9, that can be come from the, you can see first of all what you need to just check GSTR-9 status। If GSTR-9 is not filed, you can file the GSTR-9 only when 9C only when GSTR-9 has been filed। But in the software you can prepare this, what you can do, in place of fetching the data from the portal, you can just fetch the mandatory fields of the GSTR-9C that are auto populated from the GSTR-9, that can be fetched from the software before finalization of 9C। You should not file 9 if 9C is applicable in you, because there must be proper reconciliation। So you can just fetch the data from the 9,
filled in the specta, or if you have already filed 9, then you can fetch the data from filed 9. Okay, so I am just filling the data from software. So now what you can be just entering the turnover here. We have entered, and reason for the difference, if any, there we can enter here. We can type the and reasons, and it can be entered. Second thing, there is a reconciliation of the taxable turnover. First one is the turnover overall, and then it is the reconciliation of taxable turnover. Now we have given some points in the facilitation from the software. Import table 7 data from the 9. So you can just import the table 7 data. If you have filled the data in 9, this will fetch the data from the GSTR-9 filed on the portal. If you have filled the data from the 3B, it can fetch the data from the 3B also if the data is available. So it can facilitate you in filling the data from the 3B or 9 also. Okay, this is the most crucial and important part of the GSTR-9, that is the table 9. You have already seen in GSTR-9, table 9 was in GSTR-9, table 9 was containing the figures of tax payable. So you can see table number 9Q. You can see the table number 9Q, and it is mentioned the value in table 9Q will be filled from tax payable column reported in table 9 of GSTR-9. So you can see it is auto filled here. Now what you need to do, you need to just report the rate wise breakup. In this software, functionality has been provided. You can just download the data from the portal, and it will prepare the rate wise summary. Though it may be possible that in few cases rates may not be fetching from the portal, but most of the cases it is showing the correct figures. If you have reported any transaction or invoice in next financial year, in that case you need to download the data for the next financial year also, because this report is considering the invoice dates. If any invoice relating to the 24-25, whether reported in 24-25 or 25-26, that will be considering in this report. So this percentage wise report is for the purpose of reporting the invoice level, not of the return period. It may be possible in GSTR-1 return, you have reported the 23-24 invoice in GSTR-1 return, but that will not be part of the GSTR-9C, because in 9C we need to report the books or 9 turnover reporting. So you can see here it has prepared the total working, and just we need to save to GSTR-9. It will fetch the data in GSTR-9, and we can close it. Now you can see it has entered the provided the rate wise summary of the GSTR-9. You can find it here. Okay, so now you can see if there is any difference, it will show the difference here, unreconciled payment. And if you have reasons for the same, please note this figure of table 9Q is not editable in 9C. It is auto populated from 9. So you need to fill the 9 very carefully. If you find that you have prepared the 9 before filing the 9 and 9C is applicable, just prepare the 9C also and cross check the figures and then proceed to file 9 if you are satisfied with the 9 and 9C reconciliation working. Okay, so this is very important part and important table. And that RCM transaction that I have explained you, basically relating to the RCM values, just I am giving you the example of RCM also. Just a second. For the RCM, say for example, if you have RCM of 1 lakh rupees, 10 lakh rupees in the books of, sorry, 1 lakh rupees. In 9, I have no RCM. In this example, I have no RCM in 9. But in books, I have 1 lakh rupees RCM transactions. So I have just reported the RCM here. We have two options. One, we can report in 9. If we have reported in 9, then there will be difference in 9 tax payable and tax paid column. If we have not reported in 9, then tax payable will be auto populated here and we will be reporting here, then there will be difference. So अगर 9 में रिपोर्ट कर दिया है तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, अगर 9 में रिपोर्ट नहीं किया है तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। और हम यहाँ पर रीजंस में डिफरेंस का रीजन यहाँ पर हम दे सकते हैं, देयर वाज RCM transaction that could not be reported in the current year 3B.
ठीक है, और जो भी मंथ में 3B में हमने ऐड किया होगा वो यहाँ पर हम ऐड करके डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये कंप्लीट कर लेगा अपनी वर्किंग को। And after that, there is a one more reconciliation, that is the table number 10, and this reconciliation has been little bit changed from the current year. Reason being, table number 6A1 has been introduced in GSTR-9. Table 6A1 introduced in GSTR-9 that resulted in differences of the previous financial year to be settled in 9 itself. Are you getting my point? What I want to say कि GSTR 9 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी रिपोर्ट करने का जो टेबल 6A1 दे दिया, उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से ये हुआ कि अब जो 9 में जो पिछले साल की आईटीसी क्लेम करी है उसका रीजन वहीं पर सेटल हो गया, तो डिफरेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि पहले से 9C के अंदर एक फील्ड हुआ करती थी, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये फिगर यहां पर आती है, पहले से 9C के अंदर थी, लेकिन ये तब काम करती थी जब वहां पर 9 में फिगर नहीं होती थी। बट फ्रॉम द करंट ईयर गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस 6A1 ऑलरेडी इन 9, तो 9 के अंदर जब ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया तो जो 9 से ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है आईटीसी, तो 9 में जो ऑटो पॉपुलेट होके आती है आईटीसी, दैट इज फ्रॉम दी टेबल नंबर 7J, एंड 7J में जो आईटीसी आ रही है वो प्रीवियस ईयर की आईटीसी को एक्सक्लूड करके आ रही है। तो यहां पर फिर डिफरेंस अगर आप यहां पर भी डाल दोगे कि पिछले साल की आईटीसी इतनी थी, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर आपको नीचे डिफरेंस दिखाने लगेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लोगों ने रिप्रेजेंट किया, पीपल रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इशूड द क्लैरिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ FAQ। गवर्नमेंट ने इसका क्लैरिफिकेशन इशू किया कि अगर आपने 9 में ऑलरेडी 6A1 में रिपोर्ट कर रखा है, तो 9C में चूंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट होके फिगर आ रही है, तो यहाँ पे 9C में डिफरेंस दिखने लगेगा आपका। इफ यू फाइंड एनी अनरिकंसाइल्ड, मतलब ये जो डिफरेंस है इट इज आर्टिफिशियल डिफरेंस, एक्चुअली नॉट एग्जिस्टिंग, बट चूंकि यहाँ पर फिगर जो आ रही है वो ऑटो पॉपुलेट हो गई 9 से, और यहाँ पर आप पिछले साल की आईटीसी फिर से रिपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ डिफरेंस डबल, वो इंक्लूड जो नहीं था डिफरेंस वो आ जाएगा सामने। सो इन दैट केस गवर्नमेंट क्लैरिफाइड कि अगर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि जो ऑलरेडी आईटीसी पिछले साल की आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस को यहाँ पर रीजंस में एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस एंड जस्ट सिंपली रिपोर्ट इन द रीजंस, so that will clarify, and just mention the clarification issued by the government in GSTN, so this can settle your difference. Coming to the next and important part, table number 14. Table number 14 is basically the breakup of the your entire input tax credit. Table number 14 is breakup of your entire input tax credit, whatever the input tax credit you have claimed on different category of heads of expenditure, so it is reporting requirement. But this is very meticulous working. This will require meticulous working of ITC, but government again exempted or made this table number 14 as optional. गवर्नमेंट ने इस टेबल को अगेन ऑप्शनल बना रखा है, तो ये आप चाहें तो ये फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये फिल करना है तो जस्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कॉपी वैल्यू ऑफ ITC एज पर 9, जस्ट क्लिक हियर, देन इट विल ऑटोमेटिकली फिल द डेटा ऑफ 9. Otherwise, if you don't want to fill table number 14, you need not to click anywhere. If you want to fill the table number 14, just click here copy value and it will automatically filled here, and then you need to fill the values. But in my again humble opinion and humble understanding, if any requirement government has made it optional or exempted, we need not to give. It will not only increase our working part, also I have seen, I'm more into the litigation work, so I have seen various cases where the department has raised the query on the basis of this breakup provided, कि आपने यहाँ पर ये जो ब्रेकअप दिया है इसका आईटीसी जो आपने क्लेम किया है, सी के ब्रेकअप के बेसिस पर उन्होंने शो कॉजेस जारी कर रखी हैं, दे हैव इशूड दी शो कॉजेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो मेरे पास जब कोई केस लेके आया तो मैंने बोला भाई जब ये देना नहीं था तो दिया क्यों? बोले सर अति उत्साह में आ गए थे कि गवर्नमेंट मांगा है, हमने दे दिया, मेरे पास रेडी था। तो अब ये अगर आप फिल करना चाहते हो, यू मस्ट बी वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं पर आपको कोई एम्बिग्यूटी है, तो अगर गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर रखा है, देन वी शुड नॉट प्रोवाइड इट। ये दैट इज द आल्सो अगेन दिस इज द जजमेंट ऑफ द प्रोफेशनल, इट इज योर ओन जजमेंट, बट इन माय हम्बल व्यू
Whenever anything is optional, it should not be provided unless there is any specific reason or any specific benefit of disclosing, irrespective of it is optional. जब तक कि कोई हमें कोई बेनिफिट ना दिख रहा हो, तो अगेन दैट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, सो यू कैन डिसाइड एट योर ओन. So with this, we can conclude it, and just want to show one more part, that is the uploading of the GSTR-9. So after finalizing the entire data, what we need to go do, we need to just click on step 3. Now in the step 3, we have provided the various options. Upload JSON on the portal. Just click on upload JSON, and we have just provided again a working tabular working, just to cross check whatever the data you have filled in the software, because this was not originally the part of the software but recently released. Reason being, lot of people are filling the 9, lot of the uh, person who are not very much aware about the provisions of 9, and subsequently facing the issues. So we must be very much clear that if value is reported in 4n, then tax payable in 9 should be matching with this. So यहाँ पर आपको हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको सामने दिख जाए डेटा, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक. अगर आपको लगता है you have a difference and your difference is yours, we are not forcing you to stop it. We are not stopping you to upload the data. We are just highlighting the differences. We are, as per, this is also as per our understanding, not as per the government norms, government requirement. We have just highlighted the data to you so that you can just cross check. So there are some logical reasons. Say for example, we have reported the turnover this figure, so turnover in HSN summary, because subsequently department when conducting the audit will ask these questions to you. If your HSN summary is higher and your turnover is lower, so they will definitely consider it your outward supply when you are reporting in HS summary higher value. So this is just for your understanding and clarification. If you feel that no, I want to ignore it, just check it and proceed it. You can proceed and data will be uploaded on the portal. So it will not stop you, and you will see it is processed. Once it is processed, before proceeding to file on the portal, just click on the compare data. So it will show you the comparison between the software data and the portal uploaded data. So whatever the software data is showing here, so there should not be any difference. If there is no difference, just click on compute liability, just click on yes, and it will ask for the captcha. Just enter the captcha and okay, close it. So it will show you ready to file. Once it is showing you ready to file, just click on the step 5. It will open your GSTR-9 on the portal. Just preview the draft of the portal and proceed to file with the OTP or DSC. So this is the simple process that you can adopt for the filing of your GSTR-9 returns. Okay, I hope this will help you, and this will help you in compliance and processing of your GSTR-9 working and 9C working. So with this, I would like to thanks to all of you for listening to me very patiently and carefully. Now the session is open for the questions answers, and I'm here to answer your questions if you have. Yeah, hello, sir. Yes, please. I have two questions only. Suppose if I have taken input on of FY 24-25 in 25-26 and Okay, reversal also as per section, circular 170, fine. because more manufacturing company what they do, क्या हुआ कि मटेरियल आया नहीं तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया एट ऑल लास्ट ईयर बुक्स में. ठीक है. तो एट दैट टाइम मैं रिवर्स कर दिया, मतलब 4A5 में एंड देन 4B2 में. ठीक है. Now we have reclaimed. So then how will impact the 9 or 9C? Okay, sir, just want to let you know one thing. I am sharing my screen once again. आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोगों ने अपना एक बनाया हुआ है. You will open the software, and in the software you will find there is a help center. We are In using GST desktop version. Is the desktop version is the same?
Yeah, it is desktop version basically and hosted on cloud. Okay. Okay, I'm just showing you. We have provided the help section, and you will find a lot of useful information there based on the government FAQs. Just click on help and you will find annual return help center. So it will open a new page. Are you able to see the screen? Yeah. Okay, fine. Sir, here it is showing table 9 guidelines. So every table is given here. Then table 9C, GSTR-9C guidelines and help material by the GST. Okay, now it is given examples, various ITC scenarios. ITC reporting claim, reversal and reclaim. So based on the government guidelines, we have provided you the various explanations. Now you have asked, so you can see this and you can identify your example is fitting in this case or not. So as per my understanding, what you have said, reason for reversal, goods not received. Okay. So Even sir, even not books, recording books also. okay, so you have not recorded in the books also. ओके Yeah. फाइन सर. तो सर इन दैट केस देखिए इसमें दो बहुत सिंपल सी चीज आती है. मैं आपको फिर सॉफ्टवेयर से ही दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको. जस्ट लेट मी नो, जस्ट अ सेकेंड. सर इसी को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपका मान लेते हैं यहाँ पे 19,000 हम यहाँ पे डाल देते हैं 19,622. ठीक है. अब मान लीजिए आपके 8A में जो फिगर आ रही है, टेबल नंबर 8A में वो फिगर आ रही है 2,19,000 की. ठीक है. 8A में जो फिगर आ रही है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 8A में फिगर आ रही है 2,19,000 की और आपने ड्यूरिंग द ईयर जो क्लेम किया है दैट इज 2 लाख रुपीस. परफेक्ट. 19,000 की इनवॉइस ऐसी है जो कि आपके पास मटेरियल जो 2B में तो आ गई, सामने वाले पार्टी ने मार्च में डिस्पैच कर दिया था, 19 मार्च में अपलोड किया, जो आपके मार्च के 2B में दिखने भी लगी. लेकिन सिंस मटेरियल वाज रिसीव्ड इन अप्रैल, so it was recorded in your books in April, it was recorded in your 3B in April, correct? This is the scenario, sir. Correct. Fine. Now how to report, sir? For the regarding the table number 6, it will not part of the table number 6. Reason being, it is not claimed at all in your GSTR 3B return. So if it is not claimed at all GSTR 3B return for the current financial year, it will never come in GSTR 3B as table number 6. Perfect, sir. Yeah. Now, since you have basically in the month of claimed, but sir, in the month of March, as per Circle 170, we have Okay. taken the input and reversed the same. Fine, sir, fine. You have taken the input and reversed the same. So now what is to be done? Just enter the ITC here. Since you have claimed it, 622. So you should enter this ITC in ITC table number 6B. Fine. आपने चूंकि क्लेम किया है और आपने रिवर्स किया, then reversal to be reported in table number circular 170. Okay, 19622. Perfect. So now sir, your difference will gone. Your जो आपका जो ITC रिवर्सल है यहाँ पर ये वो आ जाएगा. मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ. Now your difference will be gone and what you need to do. अब आपका क्या सिनेरियो क्या बना? ITC 2B में आई थी तो यहाँ पर आपके 8A में आ रही है. ITC आपने 3B में क्लेम करी थी तो आपने यहाँ पर रिपोर्ट कर दी है. ITC सर्कुलर के हिसाब से आपने रिवर्स करी है तो आपने यहाँ पर इसको रिवर्स भी कर दी. ठीक है. अब बात आती है आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रीक्लेम किया, 25-26 में आपने रीक्लेम भी किया हुआ है. So how to report this reclaim? तो कमिंग टू दैट पार्ट, यहाँ पर आप चलते हैं. यहाँ पर इस सर्कुलर में इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चूंकि ये क्लेम किया है तो ये कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये सिनेरियो बनता है कि आईटीसी ओरिजिनल आईटीसी क्लेम 24-25, व्हेन रिवर्स 24-25, लेकिन रिक्लेम कब किया आपने 25-26 बिफोर 30 सितंबर. तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी देखिए. आपको 24-25 में कहां पे रिपोर्ट करना है? टेबल नंबर 6B, 7H और टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना है. और टेबल नंबर 6A1 25-26 का जब आप फाइल करेंगे तो वहां रिपोर्ट होगा. तो आपकी जो आईटीसी जाएगी ये टेबल नंबर
इस तरीके से आपका रिपोर्टिंग 6B 7H 13 एंड 6A1 नेक्स्ट फाइनेंशियल। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ का रिपोर्ट हो गई, चूंकि आपने यहाँ पर 6 और 7 में हो गई, और देन आप इसको जाकर के 13 में आप मैनुअल रिपोर्ट कर देंगे इसको टेबल नंबर 13 में। क्लियर है सर? या क्लियर है। एंड जब हम लोग 9C में दिखाएंगे तो बुक एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इनपुट, तो वहां पे वो इनपुट डिफरेंस वहां पे भी आएगा ना फिर? तो सर आपको वो रीजंस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर वो। ओके ओके ठीक है, क्योंकि And बुक्स sir- में वो रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि आपको Okay. मटेरियल बाद में रिसीव हुआ, तो वहां पर आप रीजन में डिस्क्लोज कर देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके। एंड सर एक चीज और था, आपका 8C वाला जो टेबल जो ओपन रहता है अभी 8C का करंट ईयर का, जो मेरे आपने एक्सप्लेन तो अच्छे से किया है कि सपोज आपका 2B में हमने उसको एज अ पेंडिंग रखा है, FY24 में 24-25 का पेंडिंग रखा है, तो वो तो हम यहाँ पे Pending रिपोर्ट in- करेंगे ना 8C? सर पेंडिंग इन IMS और व्हाट? IMS, या करेक्ट। सर जस्ट वांट टू लेट यू नो अगेन वन थिंग, IMS में पेंडिंग रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जब भी इसको IMS में जाकर के एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इनवॉइस मान लीजिए 31 मार्च 25 की थी, लेकिन वो आपके मान लीजिए सितंबर के आपने IMS में जाकर के सितंबर में उसको एक्सेप्ट Claim किया, किया। तो सितंबर के 2B में आ गया वो। लेकिन Correct. सितंबर के 2B में आ तो गया, लेकिन चूंकि वो इनवॉइस 24-25 की थी, तो 8A जब गवर्नमेंट ने जनरेट किया, तो वो 8A के अंदर इंक्लूड हो जाएगा वो। तो हाँ, आपको लेकिन यहाँ फिर पर सिर्फ 8C में 8C में रिपोर्ट करना दिखाना पड़ेगा। पड़ेगा। वही बोल Correct. रहा हूँ। करेक्ट, ओके। ठीक है सर? या थैंक यू वेरी मच। सर आई होप आई कुड क्लैरिफाई योर क्वेरी। और सर Yeah, मैं sir. सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो हेल्प सेंटर के अंदर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये एग्जांपल्स हम लोगों ने जीएसटीएन के एफएक्यू के बेसिस पर बनाए हैं। एफएक्यू में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया है, आपको जब तक पूरा रीड नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। इसको हमने टेबुलर फॉर्मेट में बनाया है जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आप इसको रेफर कर सकते हैं, अपनी टीम मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है और सर आपका एक टेबल है GSTR-9 ऑब्जर्वेशन करके, यस वहां पे मुझे एक डिफरेंस मिल रहा है, तो सर वो इसको मैंने रीजन अभी अगर मुझे नहीं मैंने इसको Last- एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस सर, ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये टेबल 3B और 9 का डिफरेंस है कि 9 में जो आप रिपोर्ट कर रहे हो और 3B में जो आप रिपोर्ट किया था आपने, उसका डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपोर्ट की आईटीसी हमने 3B में रिपोर्ट नहीं करी, ठीक है, और मान लीजिए कोई फिगर ऐसी है जिस यहाँ पर हमने ये रिपोर्ट कर रखी है, आईटीसी इसमें यहाँ पर इतनी आ रही 2,19,000 और आईटीसी 9 की आ रही इतनी। तो अगर हमने ये 19,000 नेक्स्ट ईयर में क्लेम करी है, तो 3B को तो ये पता नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे नेक्स्ट ईयर क्लेम। तो यहाँ पर रिमार्क्स का कॉलम दिया है, इसमें अपने रीजंस डाल लीजिए अगर डिफरेंस आपको नोन है। ठीक है, ये जस्ट एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3B से भी एक बार कंपेयर करके फाइल करने जाए तो आपको कोई क्लैरिटी होगी तो आप लिख सकते होगे, इसके पर्पज से है सर। इसका कोई रेलेवेंस पोर्टल पर नहीं जाएगा, लेकिन पोर्टल पर फाइल करने से पहले एक आप ओवरव्यू लेने के लिए है केवल। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमने IGST इंपोर्ट का एक्सेस क्लेम किया है और क्लाइंट से पहले ही भरवा दिया है बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR-9 DRC थ्रू, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा? सर अगर आपने IGST कर दिया है ऑलरेडी, मान लीजिए यहाँ पर आपने IGST किया है, तो आपने क्लाइंट से ऑलरेडी जमा भी करा दिया है, तो यहाँ पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिखा है ना, ये IGST इंपोर्ट वाला, यहाँ पर आप पूरी फिगर भरिए जितना आपने क्लेम किया है, और नीचे आप रिवर्सल में डाल दीजिए 7 में, रिवर्सल अदर्स में। ओके ठीक है, मतलब कई लोगों का सर इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, कुछ कहेंगे कि नहीं सर 9 मैं में आप ओपन सही करके लिख छोड़ दिए। दूंगा कि पे करा दिया है, इसके लिए बोला मैंने कि हाँ, मैं ओपन करके भी छोड़ सकता हूँ ना। करेक्ट Okay. ठीक है, ओके सर, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट्स? हेलो सर हेलो आरसीएम सर। पे आपने आवाज आ रही है सर? हाँ प्लीज टेल। सर आरसीएम का जैसे आपने बताया कि आरसीएम पेड, और अगर इनपुट नेक्स्ट ईयर में लिया है तो इस साल के 9/9C में कुछ भी नहीं आएगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ 2025-26 9/9C। तो सर इसमें अगर पार्शियल हो तो सपोज 1 लाख आरसीएम पे कर दिया, 40,000 का सर आईटीसी मैं लिया, एक चीज 40,000। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो वन थिंग। एक चीज मैं इसको खाली ऐड करूंगा, मैंने ये बोला कि 9 में रिपोर्ट नहीं करना है, बट 9C में आपको अपनी बुक्स के हिसाब से रिपोर्ट करना चाहिए, और नीचे रीजंस ऑफ डिफरेंस में वो डिफरेंस आएगा 9C और 9 का, और डिफरेंस में वो मेंशन करना चाहिए आपको कि ये आरसीएम की लायबिलिटी आपने 24-25 की आरसीएम की इतने रुपए की लायबिलिटी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जिस भी महीने के 3B में पे करी है, वो मंथ मेंशन करिए और उसके साथ वहां पर लिख दीजिए। ये 9C में रिपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज सर जब भी कभी फ्यूचर में ऑडिट होगा
तो डिपार्टमेंट तो आपकी बुक्स लेके कहेगा कि आपकी बुक्स के हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इतने खर्चे दिखाएं जिसपे आरसीएम बनता है, जो कि आपने पे नहीं किया है। आप कहोगे सर मैंने नेक्स्ट ईयर के 3B में पे किया था, तो कहेगा सर हम कैसे मान लें कि नेक्स्ट ईयर के 3B में जो पे किया वो नेक्स्ट ईयर का ही है। तो आप कहोगे सर नेक्स्ट ईयर की बुक्स भी चेक करिए, वो बोलेगा नहीं सर मैं नेक्स्ट ईयर का ऑडिट तो कर नहीं रहा हूं, आई कैन नॉट चेक। तो टू अवॉइड द लिटिगेशन थिंग्स, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम 9C चूंकि रिकंसिलिएशन करते हैं बुक्स और 9 का, 9 में नहीं दिखाना है, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है। 9C में चूंकि बुक्स का दिखाना चाहिए तो बुक्स के हिसाब से हम फिल करेंगे, रीजन फॉर डिफरेंस में उसको दिखा देंगे। सेम रूल एप्लीकेबल होगा अगर वो पार्शियल है तो भी, ठीक है। तो सर मैं 9 के अंदर भी सर जैसे 1 लाख रुपीज का अगर आरसीएम पे किया है और इफ इन केस क्लाइंट 80,000 का आईटीसी लेता है, 20,000 भूल जाता है और नेक्स्ट ईयर में लेता है, तो 20,000 का कहीं पर भी यहाँ पे 9 में इम्पैक्ट नहीं आएगा या टेबल 12-13 का पार्ट बनेगा वो? ये मेरी क्वेरी है सिंपल सी, क्योंकि टैक्स चुका है। यस, आपने 3B में क्लेम कब किया उसके बेसिस पर 9 में भरा जाएगा। अगर वो 3B ओके। में क्लेम नहीं किया है तो 9 में नहीं भरा जाएगा वो। तो 12-13 का भी पार्ट नहीं बनेगा सर, राइट? सर मेरा ओपिनियन है तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 9 में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक बार आप उसका इंस्ट्रक्शन भी चेक करिएगा, उसमें उन्होंने दिया है कि अगर जो भी रिपोर्टिंग 3B में जिस हिसाब से की है उस हिसाब से आपको 9 में करनी है। अंडरस्टूड सर। और एक जैसे आपने हमको बताया कि अगर 180 दिन का रिवर्सल है तो हम लोगों को उसको GSTR-9 से एक्सक्लूड करना है। तो जैसे अभी सर का एग्जांपल था कि गुड्स रिसीव नहीं हुए तो इन्होंने आईटीसी रिवर्स कर दी 3B में, पर वो मेरी बुक्स के तो आईटीसी का पार्ट था, तो वो 9C के अंदर टेबल 12 का तो पार्ट बनेगा ना सर, आईटीसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बिल्कुल फिर बिल्कुल वहां पे डिफरेंस शो होगा, वो हम दिखेंगे कि 180 दिन के बिल्कुल रिवर्सल परफेक्ट, सॉरी एब्सोल्युटली मतलब करेक्ट। गुड्स सर नॉट। वैसे ही करेंगे। यस यस, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर ये ऑडिटेड, हेलो हेलो यस यस। सर, एक क्वेरी है सर ये मेरी। सर ये हाँ हाँ बोलिए 9C सर। में GSTR-9C में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से 10 करोड़ तक तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो उधर क्या वाला स्टेटमेंट अपन अपलोड करेंगे? सर क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ मुझे, आपकी आवाज कट गई सर। हेलो यस यस प्लीज टेल सर। सर, 9C में बताया गया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक अगर है मुझे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा इनकम टैक्स के हिसाब से, तो मैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट अपलोड करूंगा? सर, आप जो भी अपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो करेंगे। लेकिन उसमें ऑडिटेड लिखा है ना, अनऑडिटेड नहीं है ना? सर ऐसा कौन सा केस है कि जहां पे टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर हो और ऑडिट ना होता हो? मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो आइडिया नहीं है मुझे, ऐसा कोई है क्या कि ये किसी इनकम टैक्स बिजनेस के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से रहता है ना, 10 करोड़ का 5 करोड़ लिमिट। से? ऑनलाइन। अच्छा यस सर, ऑनलाइन। ओके, तो ठीक है सर। अगर आप देखिए जीएसटी एक्ट आपको ऑडिट कराने के लिए नहीं कहता है, ठीक है, जीएसटी एक्ट आपको ऑडिट कराने के लिए नहीं कहता है। तो अगर आप किसी एक्ट में ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो ऑडिटेड आप लगाइए। अगर आपका ऑडिट नहीं है तो आप ना कहीं पर रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं, या जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें ही नीचे एक अटैचमेंट लगा सकते हैं कि आपकी बुक्स का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू दिस प्रोविजंस एंड देयर इज नो अदर प्रोविजन व्हिच मैंडेट यू टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, हेंस अनऑडिटेड अकाउंट्स आर इनक्लोज्ड हियर। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि टेबल नंबर 5 में जो एक्सपोर्ट वाला मेरा रहता है, जीरो रेटेड वाला, जी, उसमें मैं कुछ क्रेडिट नोट अगले साल के इसमें दिखाता हूँ, तो मैं वो कौन से टेबल में शो करूंगा? जीएसटीआर 9 के टेबल 5 में जो क्रेडिट नोट्स हैं आपके, क्रेडिट नोट है, मैंने अगले साल में दिखा है, हाँ हाँ, तो मैं वो कौन से टेबल में शो करूंगा? अच्छा ओके, मतलब आपके जो भी क्रेडिट नोट्स हैं किसी भी रीजन से आपने क्रेडिट नोट इशू किए थे लेकिन वो रिपोर्ट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 में रिपोर्ट किए हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट वाले सर, लेकिन वॉट एवर एक्सपोर्ट मे बी, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई बात नहीं हाँ, सर। आप इसको फिर टेबल नंबर 10 और 11 इसका यूज कर सकते हैं। टेबल नंबर 11 में वैसे आता है टैक्स सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट ऑब्लिक क्रेडिट नोट। टेबल नंबर 11 में आता है वो जो करंट लेकिन ईयर मैंने का उसमें ट्रांजेक्शन। लेकिन मैंने उसमें दिखाया ना, तो मेरा 9C में फिर से डिफरेंस आ रहा है। उसमें आपने दिखाया तो 9C के टर्नओवर में डिफरेंस आ रहा है कि टैक्स में डिफरेंस आ रहा है? और टर्नओवर में डिफरेंस आ रहा है, टर्नओवर में। सर 9C में जो टर्नओवर आता है ना सर, वो वहीं से आता है, टेबल नंबर 10 को कंसीडर करते हुए आता है वो। नहीं सर, टेबल नंबर, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ टेबल नंबर कौन सा है 9C वाला जिसमें मेरा डिफरेंस आ रहा है।
इसमें 9C में टर्नओवर वाला जो पार्ट है ना, उसमें डिफरेंस आ रहा है उसमें का। टेबल नंबर 7 में मेरा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, टेबल नंबर 7 सर एक्चुअली जो होता है ना वो एग्जेम्प्टेड के लिए है केवल वो। हाँ, आप ठीक है। एग्जाम्पल करके देखेंगे ना तो आपको मतलब रियलाइज होगा वो हाँ, वाला वो केस। एक्चुअली सर टेबल नंबर 7 में जो डेटा आता है वो जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आता है वो उसमें शायद कवर नहीं करता है उसको। एक बार सर चेक करना पड़ेगा मुझे, ये आपका जो केस है वो एक बार देखना पड़ेगा, एंट्री फिगर डाल करके कोई ना कोई रास्ता होगा, डिफरेंस खत्म हो जाएगा उसका। सर ओके, आप चलेगा सर। सर आप टेबल 5 में नो सप्लाई के अंदर कौन सी सर्विसेज डालते हैं, कौन सी सप्लाई डालते हैं? कोई एग्जांपल दे सके? नो सप्लाई टेबल टेबल नंबर 5 के अंदर जो एग्जेम्प्टेड वाली जो टेबल है उसके अंदर हाँ एक हाँ कॉलम नो सप्लाई का भी होता है, नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूडिंग नो सप्लाई। सर, नॉन जीएसटी सप्लाई जो बेसिकली है वो आती है आपकी जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल डीजल जो भी जीएसटी के पर्व्यू से बाहर है या शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शंस का पार्ट होते हैं। HSD और MS। अब सर जैसे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 3 का पार्ट हो और वो पीएनएल के अंदर आ रहा हो तो क्या इसको यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि मैंने एक इंस्टेंस देखा था उसके अंदर फिर एचएसएन की समरी के अंदर वो एचएसएन कोड नहीं मिलता है तो मिसमैच आ जाता है। अच्छा अच्छा सर, इसमें लेकिन एक चीज और भी है, आप जब आप उसका वो देखेंगे ना टेबल 5 का इंस्ट्रक्शन जीएसटीएन का, तो उसमें उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि जो आपके कुछ टेबल्स हैं, टेबल नंबर 5, 4-5 टेबल्स हैं, उनको आप क्लब करके ए से लेकर के एफ तक है जो, उसको आप क्लब करके भी दिखा सकते हैं। और सर एक मैंने क्वेश्चन और पूछा था, ये आरसीएम के अंदर जो वी नीड टू सेग्रीगेट, डू वी नीड टू सेग्रीगेट बिटवीन अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड? यस डेफिनेटली सर, आपको टेबल 6 सी और डी इसीलिए दिया गया है कि अनरजिस्टर्ड से अगर लिया है तो उसका आरसीएम आपको सी में दिखाना है, रजिस्टर्ड से लिया है तो डी में दिखाना है। वो ब्रेकअप इसीलिए दिया गया है वो। सो कैन वी डू सर वन थिंग कि क्योंकि ट्रांसपोर्टर जनरली कुछ रिटर्न्स बढ़ते हैं कुछ नहीं बढ़ते हैं, तो जो टू बी के अंदर आ रहा है वो रजिस्टर्ड में बता दें और डिफरेंस जो है जो अनरजिस्टर्ड में बता दें, क्योंकि प्रैक्टिकली डिफिकल्टी रहती है कभी सर कभी वो। इससे इससे अच्छा कोई और तरीका हो भी नहीं सकता है। क्योंकि सर क्या काफी बार ठीक है, होता है क्योंकि बिल्टी। डिपार्टमेंट भी जब वेरीफाई करेगा तो वो कहेगा आपके टूवी में इतने आरसीएम दिखा रहे हैं तो आपने कितने रजिस्टर्ड के दिखाए हैं। बाकी फिर अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर ट्रेस मिलता है कि नहीं ये आपने आरसीएम रजिस्टर्ड से लिया था और आपने अनरजिस्टर्ड में दिखा दिया है, तो अगेन मेरा मानना है सर ये केवल ऊपर एक प्रोसीजरल लैप्स अगर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं है। हेलो यस मैम। सर, ये क्रेडिट नोट एक है जो हम लोग ने जब टैली रिव्यू कर रहे थे तब हमें पता चला कि एक क्रेडिट नोट रिपोर्टेड नहीं है, तो उससे GSTR 9 में हम कहाँ रिपोर्ट करें? नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल में रिपोर्ट किया या नहीं किया है? सर रिपोर्ट किया नहीं है, अभी करेंगे नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ओवरऑल कहीं नहीं किया है ना? हाँ जी। ओके, तो दो चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने ये पॉइंट कवर किया हुआ है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका छूट जाता है तो या तो आप इसको अपने रिपोर्ट कर दीजिए उसमें टेबल नंबर 4 में 5 में जिसमें भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप इसको टेबल नंबर 9 में रिपोर्ट कर सकते हैं, 9C के में भी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आप अडॉप्ट। सर लास्ट ईयर की लेकिन जीएसटी, हेलो। जी जी बोलिए। हेलो सर, लास्ट ईयर की GSTR 9 में ना फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टेबल 12 में आईटीसी की रिवर्सल दिखाई थी, वो करंट ईयर में उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? सर 6A1 में एडजस्ट करके दिखाना चाहिए वैसे आपको। सर रिवर्सल के लिए तो मना करता है ये FAQ। नहीं नहीं, उसमें सर पोर्टल नेगेटिव फिगर एक्सेप्ट कर लेता है, अगर आपको मैच करके देखना है तो आप उसको रिवर्सल की फिगर्स को माइनस में डालेंगे 6A1 में तो वो एक्सेप्ट कर लेता है पोर्टल रोकता नहीं है आपको। ठीक है सर। ठीक सर, है हेलो सर। हेलो सर। यस यस प्लीज टेल। सर एक मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी था जो मैंने क्लेम किया और रिवर्स किया, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिक्लेम करके रिवर्स किया, परमानेंट रिवर्सल। ठीक है तो वो किधर रिपोर्ट होगा? सर, मैं इसको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूं, और आप एक बार ये जो मैंने बताया ना आपको हेल्प सेंटर दिया है उसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, तो सारे सिनेरियोस उसमें कवर्ड है। एक बार आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर आंसर मिल जाएगा, आपके सारे सिनेरियोस उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। मैं एक सर बार इसमें लिंक शेयर जस्ट करता हूं। जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में परमानेंट रिवर्सल हुआ वो टेबल 12 में भी रिपोर्ट होगा?
नहीं, तो आपने करंट ईयर में ले लिया था उसको। 24-25 में क्रेडिट लिया और टेम्पररी रिवर्सल किया, और 25-26 में रिक्लेम करके परमानेंट रिवर्सल कर दिया। हाँ, तो सर उसको फिर आपको देखिए, आपने चूंकि टेम्परेरी रिवर्सल किया था, तो वो टेबल 12 में क्यों जाएगा? आप दोबारा से अगले साल रिक्लेम कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ, रिक्लेम। रिक्लेम करके नेक्स्ट ईयर उसको परमानेंट रिवर्सल कर देते हैं, बिकॉज इनएलिजिबल था वो। तो रिक्लेम करके आप जब आप करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो पहले आपको टेबल 13 में डालना पड़ेगा। और चूंकि आपने ये डिसीजन नेक्स्ट ईयर लिया है कि ये परमानेंट रिवर्सल है, ठीक है, हाँ, तो इसलिए आपको टेबल 13 में डालना पड़ेगा कि हम अगले साल क्लेम करेंगे, और अगले साल क्लेम करके आपने रिवर्स किया, तो ये उस साल के 3B में जाएगा ये। ओके, बट रिवर्सल में भी जाएगा, मतलब 12 वाला सर पार्ट में भी रिवर्सल में जाएगा, नहीं 9? जाएगा, मेरे हिसाब से रिवर्सल में नहीं जाएगा ये। ओके सर हेलो सर हेलो सर। हेलो सर एक मेरी क्वेरी है। हमने 2021-22 में एडवांसेस पे टैक्स पे कर दिया था, एडवांस सर्विसेज के अगेंस्ट में। उसके अगेंस्ट में 24-25 में हमने सर्विसेज सप्लाई किया, तो उसको कहाँ पे रिपोर्ट करें कि हमने अपने 9C में कहाँ पे रिपोर्ट करना है कि हमने इसको एडवांस पे किया, क्योंकि उस पर तो टैक्स लायबिलिटी कोई पे नहीं हुई इस ईयर में। हम्म। उसको 9 में कैसे रिपोर्ट करें उसको? सर शांत उसमें रहो देखिए यार। क्या, सर उसको एडवांस एडजस्टेड में दिखाते हैं ना आप, तो जो आपने वन फाइल किया होगा, वन के पहले आपने B2B या B2C में दिखाया होगा, और फिर हाँ आपने वन में जो दिखाया होगा वो एडवांस एडजस्टेड करके दिखाया होगा वन में। हाँ। ठीक है, तो अगर आपने एडवांस एडजस्टेड करके दिखा दिया है, तो फिर वो ऑटोमेटिक अपना जो वो फिगर बनेगी वो एडजस्ट हो करके आएगी। नहीं, बट 9 में तो हमारा जो सिस्टम से डाउनलोड कर रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें। तो सर वन में आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की होगी, इस वजह से ऐसा होगा। तो ये फिर हमारा करेक्ट रिपोर्टिंग होगी टेबल 4 और F के अंदर निगेटिव जी में। जी, बिल्कुल। सर हेलो। GSTR-9C की टेबल ओके नंबर सर। 12 में। हेलो। यस प्लीज टेल हेलो सर। GSTR-9C की टेबल नंबर 12 में जो फर्स्ट पॉइंट है, ITC अवेल्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तो बुक्स वाला वो आएगा ना जो बुक्स में फाइनल करा हमने। जी हाँ, जी हाँ। और नीचे हमारा फिर क्या नाम है जो ITC क्लेम करा 9 में, और जो सर जो डिफरेंस रह गया टेबल वो नंबर हमारा। 12, टेबल नंबर 12 है, उसमें जो 12A है उसमें लिखा ही हाँ हुआ है कि एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी हाँ। क्या आईटीसी है। और जो हमने टेबल नंबर 12 की C में वो डाल देंगे जो हमारा नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करा है हमने, करेक्ट करेक्ट। तो हमारा डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो यस प्लीज। हेलो। actually हेलो सर। if we have a ITC reversal, so we need to make the GST payment in 3B. So how to report it in GSTR-9 table in 9C Sir, rate wise? if you have made reversal, that reversal is more than the ITC claimed, as I understand. Yes. Okay, sir, in 9 GSTR 9 9C, you need to report in specific columns. You need not to read about the whatever the amount you have paid through 3B. There actually what the portal does, in case you have ITC claimed rupees 1 lakh, but you have reversal 2 lakh, you have 1 lakh Yes. 50,000. So what the portal does while filing the GSTR 3B, it includes the 50,000 as a liability in tax payable column. Output Correct? tax liability. Yes. Yeah, Yes. it include in the tax payable column. So while filing the 9, you should report the proper turnover as per the table 4 and 5, proper ITC and ITC reversal in table 6 and 7. It may be possible in tax paid column, it will be showing the higher value. Yes. It will be showing the higher value. So let it be, it should be shown. Okay. But in 9C, in table 9, we need to disclose it rate wise. Na? There it is a In difference. table Will 9, sir, let me clear. In table 9, we need to disclose the rate-wise outward supply, not the purchases, not the ITC reversal. but it's showing the difference, sir. Exactly Sir, what it is is the showing, ITC we sir, paid. it is showing the difference because in tax payable column, you might not have the reported the tax payable on outward supply in RCM. You have reported the auto-populated figure that is populated by the portal. So that must be including the figure of the that ITC reversal also. If it is So so, if you have already filed the 9, in that case, in 9C, you can just mention in the reason section. Okay. okay, no need to disclose it in other step. No, sir. That is fine. Oh. Because if you, sir, have you filed the 9 or not? Not filed, sir.
If you have not filed, then you need to properly fill the table number 9 tax payable column of 9. That should include the tax payable as per the outward supply and RCM transaction. So in table number 9 you will find tax payable is less and tax paid is higher. That higher Yes, sir. figure is due to the reversal of ITC figure, correct? Yes. And the tax payable column will auto populated in 9C, so your rate wise reconciliation will match with the 9C. Okay. Sir, one more doubt is, what is the difference between 4K and 4L table and 1011? 4K and 4, sir, 4K and 4L is basically whatever the amendment done during the financial year. Say, for example, if you have issued the reported invoice 1 lakh rupees in April 1, and in June 2024, you have amended that invoice from 1 lakh to 1 lakh 20,000. So that amendment is to be reported in done in same financial, and it is to be reported in 4K or 4L. But if amendment is done in the next financial year, GSTR 1 or 3B, then it is to be reported in table 10 or 11. If we disclosed it next financial year and we amended in next financial year, it will goes to 10 and 11, sir. Yes, correct. Sir, you just need to read the heading of the 10 and 11. When you refer the heading of the 10 to 13, it is clearly mentioned current year transactions reported in next financial year. Okay, sure. Thank you, sir. Hello. Yes, Sir, one please tell. question. हेलो Yeah, please ask. सर, एक्चुअली जैसे अगर मेरी टर्नओवर 5 CR से कम है तो क्या हाँ। मुझे एचएन समरी B2C सप्लाई है सारी, तो क्या मुझे एचएन समरी मैंडेटरी रिपोर्ट करनी है और मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी 9 वाली? अगर मैं टर्नओवर आपका 5 CR से कम से सारी है, और B2C सप्लाई है सारी, तो आई थिंक इट इज ऑप्शनल एज आई अंडरस्टैंड। हाँ जी। एक बार आप पोर्टल पे अपलोड करके देख लीजिए, वो खुद ही दिखाएगा वैलिडेशन। जब आप प्रोसीड टू फाइल करने जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा। अगर वो देखिए हम कह देंगे कि नहीं है और पोर्टल कहेगा हाँ नहीं चाहिए, तो माननी तो पोर्टल की पड़ेगी सर। तो एक बार पोर्टल पर अपलोड करके देख लीजिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हेलो यस यस सर, मेरा जीएसटी में टर्नओवर 5 करोड़ था, ठीक है ना सर? और जब ऑडिट हुआ तो वो 5 करोड़ 30,000 हो गया, ठीक है। और मैंने वो अमेंडमेंट भी अभी तक नहीं किया क्योंकि वो सारा B2C था। तो मैं चाहता हूँ, मतलब वो सारा B2C था जो ऑडिट में बढ़ गया, 5 करोड़ था, ऑडिट में 5 करोड़ 30 लाख हो गया, 5 करोड़ 30,000 हो गया, 30,000 एक्सेस हो गया ऑडिट में टर्नओवर। तो मैं चाहता हूं सर, इसको 9 में मैं कहीं शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट 9C में शो करके इसका इंटरेस्ट पेड कर सकता हूं सर? सर मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए थे कि अगर ऐसा कभी होता है तो आप 9 में करके डिफरेंस जो है 9 में दिखेगा और वो आप डीआरसी से पे कर दोगे। टेबल 9 में दिखेगा डिफरेंस, वो डीआरसी से पे कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना 9 एज पर 1 के थ्रू फाइल कर दो और 9C एज पर बुक्स बना करके 9 का डिफरेंस 9C में दिखा के आप वहां पे कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको जजमेंट में अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो जी बोलिए प्लीज। मेरे 2023-24 के काफी सारे इनवॉइस 2024-25 में मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है। हेलो सुन रहा फिर हूं। ये जो मेरा अभी ये मैं 9 फाइल करूंगा तो GSTR-1 से पिकअप करेगा, तो उसमें 23-24 का भी टर्नओवर आ जाएगा? करेक्ट आएगा। तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ना B2B और B2C सब? आपको जब 9 फाइल करेंगे तो उसमें आपको अपनी फिगर जो भी होगी वो एक्सक्लूड करने होंगे, ट्रांजैक्शंस जो भी आपके उसके रिलेटेड हैं। मतलब 23 को B2B मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि आईटीसी में कॉलम है कि भाई माइनस कर दो प्रीवियस ईयर में, ये आउटवर्ड में नहीं है। आउटवर्ड में आपको सिर्फ फिगर ही रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप ये फिगर चेंज करेंगे तो डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आएगा आपको फ्यूचर में, क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए कि आपने 1 में कुछ और दिखाया है और 3B में कुछ और दिखाया है। उसका रीजन क्या है? डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजता है तो वो जो ऊपर टोटल समरी दिख रही होती है उससे भेजता है कंपेयर करते हुए, वो एक एक इनवॉइस की डेट को कंसीडर करते हुए नहीं भेजता है वो। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आ सकती है अगर आपने इसमें किया। बट यू शुड बी प्रिपेयर, अगर आपकी नॉलेज में डिफरेंसेस अवेलेबल हैं then you should report the correct report returns and with the difference keeping in your records, and whenever it is asked just provide the reasons. ओके क्योंकि मैंने 23-24 में तो बता ही दिया होगा कि ये मैं 24-25 में कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। करेक्ट सर। Sir, I have one query. Yeah, please tell.
मेरा एक क्रेडिट नोट है 23-24 का जो GSTR-1 में अपलोड हुआ है करेक्टली 24-25 अप्रैल 24 के, बट ये जो GSTR-9 में जो टेबल 4 में आता है ना 4I क्रेडिट नोट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबव, उसमें वो ऐड होकर नहीं आ रहा है। तो सर अगर वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं रिपोर्टिंग की कोई इश्यू तो नहीं है, रिपोर्टिंग की एरर तो नहीं है। अगर रिपोर्टिंग की एरर नहीं है तो आप फिर अपने हिसाब से जो भी आपकी करेक्ट फिगर क्योंकि है वो मैंने करिए। स्पेक्टा का GSTR-1 रिपोर्ट भी डाउनलोड किया ना, तो उसमें वो इंक्लूडेड है, जो अच्छा। मेरा ईयरली GSTR-1 की समरी में वो ऐड होके दिख रहा है, बट पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करने में वो नहीं दे रहा है। ओके ओके, ठीक है सर। तो आपके उससे पास मेरा अगर टैक्स का डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं देन फाइन, आप जो भी रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो आप प्रोसीड आई करिए। कैन मॉडिफाई दैट, राइट? यस सर। हेलो हेलो यस सर। Hello. हेलो Is बोलिए बोलिए सर this प्लीज। webinar available on Specta, sir? सर Is इट this विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब सर, डोंट वरी। okay? Thank you. एनी अदर क्वेश्चंस? या प्लीज सर। हेलो सर सर एक मेरा क्वेश्चन है कि 23-24 में कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम की थी कार के ऊपर मैंने, एंड 24-25 में कुछ भी नहीं किया। 25-26 में अक्टूबर में उसको रिवर्स कर दिया DRC 3 के थ्रू और पे कर दिया। तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे 9 में? सर फिर से बोलिए, 3 साल आपके इसमें आ गए। 23-24 का क्या था? 23-24 मार्च में कार परचेज की थी, उसकी कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम कर ली। ठीक है, तो 23-24 में क्लेम कर ली थी आपने? जी मार्च में। ठीक है। 23-24 का 9 अभी फाइल नहीं किया है, 24-25 में भी अभी 9 नहीं फाइल किया, करना है अभी। अब अक्टूबर के महीने में डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने आईटीसी क्लेम कर ली है, इसको रिवर्स करिए, तो DRC थ्रू उसको रिवर्स करके पेमेंट कर दिया है। ठीक है। तो इसको अब रिवर्सल जो किया वो 23-24 के 9 में रिपोर्ट करूं या 24-25 के 9 में? सर जब ट्रांजैक्शन 23-24 का है, क्लेम 23-24 में किया है, तो 9 जो 23 में ही जाएगा, 23-24 में ही। 24 से उसका कोई लेना देना नहीं ना। अगर आपने 24 के 3B में रिवर्स किया होता तो भी तो एक बार सोचते कि हाँ ये कुछ होगा इसमें। 24 के 3B में कोई मूवमेंट ही नहीं है अगर इस चीज का है, तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा 9 में इसके। ठीक है। दूसरी चीज, आपने चूंकि DRC से रिवर्स किया है तो सिंपल 9 23-24 के 9 में दिखाइए और उसका 9C DRC आपने बनाई रखा है तो कोई इशू नहीं है। तो मतलब उसको वहां पर क्लेम कर लें, उसमें आईटीसी वाले क्लेम में, और रिवर्सल में वो रिवर्सल डाल दें उसका। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू। हेलो यस सर हेलो प्लीज। जो रिक्लेम आईटीसी है, अभी मेरा 24-25 में 23-24 का आईटीसी भी अपेयर हुआ और उसको रिवर्स करके फिर बाद में रिक्लेम कर दिया, तो वो शो करना है रिक्लेम में कहीं पे, या और जो अगर मुझे मेरा कुछ आईटीसी रिक्लेम में मतलब रिक्लेमेबल भी पड़ा हुआ है लेकिन वो मेरा मतलब नहीं है आईटीसी, तो उसको रिवर्स कैसे करने का परमानेंटली अगर करना है तो? या सर आईटीसी से रिलेटेड आपके जितने भी रिवर्सल रिक्लेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, उनका सारा आंसर ये देखिए, मैंने आपको एक हेल्प दिया हुआ है, यूआरएल दिया है, इसमें दिए हुए मल्टीपल एग्जांपल्स। आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं सब इसमें कवर्ड है, जो भी गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, एवरीथिंग इज कवर्ड। कहाँ पे मिलेगा वो? मैंने सर ये चैट में देखिए लिंक शेयर किया हुआ है, और इवन आप अगर सॉफ्ट स्पेक्टा यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे आपको हेल्प मिलेगा, तो उसके अंदर सबसे ऊपर टॉप में ऑप्शन आता है एनुअल रिटर्न हेल्प सेंटर। ओके ठीक है, उसमें सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं, एक बार आप ट्राई करिए, देखिए उसको। ठीक है, तो आपके सारे आंसर उसमें हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी इसको कई बार कवर कर चुका हूं इन पॉइंट्स को। यस ओके, थैंक यू। हेलो सर वन क्वेश्चन सर। प्लीज सर, या बोलिए सर। Sir, actually, in our GSTR-9, ineligible ITC of rupees 5,000 is reflecting in column number 7. Actually, one subcontractor twice submitted the return. Actually, it is ineligible. What is to be done, sir? नहीं, तो ये 2 बार उसने आपके 2A में डाल रखा है, 2B में डाल रखा होगा। Subcontractor submitted this one
Two times, one against one invoice. You have claimed both the times, or you have claimed No. only one time? We took only one. So if you have taken only one, then you need not to report or reverse. It is reflected in GSTR-9 column number 7. No, it is Ineligible not ITC. reflecting automatically in table column number 7. It is reflecting in table number 8A, I think. Okay. Okay. So if you have not claimed, then you need not to reverse at all. Otherwise, it will be creating double burden on you. First, you have not claimed and you have reversed, showing as reversed, then department will ask where you have reversed. So if you have not claimed, you need not to reverse this case. We haven't claimed it so far. You have already claimed it. Only one we claimed. The second one is ineligible. We haven't claimed. Sir, if you have not claimed, then no worries. We don't want to do nothing in this regard. We can save it and file submitting the GSTR-9 without any problem. Yes. Sir, what you can do, you can, because I think there may be some confusion in communication. So what you can do, if you have any query, you can just write it through mail. I'm sharing my mail ID. Okay. So if anyone facing any issue in filing the GSTR-9 relating to any technical issue or any whatever maybe, just write a mail to me with the relevant table and relevant cases. I will definitely try to guide you. Okay, sir. I've shared my mail ID. I've shared my mail ID in chat box. You can just refer it, and you can share your queries to me. Thank you. Sir, with reference to sales. Yes. If some party has not accepted credit notes in next year, then 3B is auto-populating higher amount and we have paid the same. How can we claim refund on that? Or we'll have to show anywhere or not? Sir, this is the actually disputed scenario, and this scenario is no having any answer from me or from anyone, because it is a dispute case. Dispute case means you are saying you have issued the credit note, but your party is not accepting the credit note. So it is a dispute between you two. So first come on to the mutual understanding both the parties. No, they have raised debit note to us. Against that, we have issued credit notes. He has raised a debit note to us. Yeah, we have made supply. Some rejections. Okay. So you they have have already supplied. Yeah, okay. I have supplied. You have supplied, and that party has raised the debit note, correct? Yeah. And you have raised the credit note. Yeah, and upload the portal also itself. Okay, sir, in that case, actually, what is the requirement of the law? Section 34 of GST Act says it is the responsibility of supplier to issue the debit note or credit note. Debit note or credit note in respect of supply. Your buyer has raised the debit note. They have prepared the debit note in their books of accounts to settle the adjustment for return transactions, but they are not required to upload on the GSTR-1. So they have done wrong. They need to rectify at their end. You need not to make any rectification. If now the case may be you might have paid the tax on that transaction, you have claimed the ITC of that debit note. So again, you have done. I have not claimed the ITC on that debit note You have because not as a claimed. supplier, it is our responsibility to show that portal. Yes, definitely, sir. So in that case, you need to ask your party to reverse that debit note. Okay, to reverse the debit note, and then you need to raise against the credit note. You need not to file for the refund because department will not entertain the refund in this case. But the year has been closed, so we'll have to go only for a refund only. I don't think so. They will provide the refund. Little bit difficult to make the officer understand this scenario actually. Okay, sir. Thank you. Okay, with this, thank you very much for all the audience. Thank Other you, question sir. remaining with anyone, please let me know because I have to leave also for another meeting. Thank you, sir. Thank you. Okay, so I hope everyone is clear and
I hope in case any query, you just note my mail ID I have shared in the chat box. Just write to me, and in case any query, I will definitely try my level best to provide you the resolution. But I'm not committing you that when you raise the query, because it is not paid service. I'm just here to help you for the purpose of just for the professional interest, not as per our the basic requirement. So whenever I will find the time, I will definitely try to reply you relating to the queries of your specific scenarios of the reporting requirement. Okay, thank you very much for listening patiently, and Thank you, sir. we will sharing the recording on YouTube, so it will be available soon on the YouTube. Thank you very much. Thank you, sir.